Hello, everyone. Welcome to the mission series for ACCA. But before we start the mission series, let's have a quick look on what MEPL has to offer and have a little understanding of ACCA. So let's get started with it. Okay. Now, as you all know, that MEPL has been doing phenomenal in terms of EdTech. Okay, it's a beautiful EdTech company that teaches various educational courses like CFA, CMA, CA in India, and ACCA is obviously a feather on the cap. So let's quickly have a look at what MEPL is providing. MEPL has started teaching ACCA under their head, which is amazing. And they have initially learned and received a silver learning partnership from ACCA, and they are a licensed CBE center. Now, what does a licensed CBE center mean? That means whenever you want to give your first 4 papers, which is business technology, management accounting, financial accounting, and the corporate business law or a law paper, you can do it at the center of MEPL classes. Okay, so which is a center which is based in Kolkata, and they would be happy to take you on board, and you can give your first 4 exams from the convenience of their place, right? Now, when we talk about MEPL, you will ask me why MEPL? Why to study in MEPL and why to study ACCA, right? So let's understand why to study in MEPL first. Because MEPL is a silver learning partner. Second, they are giving you 100% placement assistance. Wow, that is wonderful, right? Especially, why do you all study? आप लोग पढ़ाई क्यों करते हो, right? ताकि आपको अच्छी सी जॉब मिले. और आपको जॉब क्यों चाहिए? ताकि आप अपना फ्यूचर सेट करें, फाइनेंशियली साउंड हो जाए, राइट? MEPL is giving you that opportunity. MEPL is 100% giving you a placement assistance. Thirdly, they are approved CBE center. आपको first 4 papers देने हैं, BT, MA, FA या फिर law. आप approved center पे जाके दे सकते हो या फिर remotely दे सकते हो, which is from the convenience of your home. अगर आपको center पे paper देना है, definitely MEPL can provide you that service. This is amazing. They are giving you a ACCA pass guaranteed program. They are working with Kaplan Professional Education. That means जो भी आप books लोगे, वो सारी is coming out from Kaplan Professional. And Kaplan has been a wonderful publication house who is giving ACCA books. In fact, I myself has also studied in London in Kaplan Financial only. Expert faculties, yes, of course, there are many expert faculties like me. They all are ACCAs and they are very talented and experienced, and they will be very happy to have you all on board. We have multiple mock exams because just doing the education or just studying would not help. At least one mock paper should be solved with the faculty, and obviously you can do multiple mock exams with your convenience. You can study anytime and anywhere. MEPL does provide you an online platform. आपको कोलकाता में रहने की कोई जरूरत नहीं, आप कहीं पे भी हो, पैन इंडिया हो, ग्लोबली हो, you can from anywhere enroll into MEPL classes and study from anytime at anywhere. You will also get unlimited views to recorded lectures, scholarship for the potential students, live online lectures are available, and recorded lectures. Everything is available for you. You will be learning ACCA from ACCA. So it is for ACCAs by ACCAs. Best in-house team comprising of quality educators from across the globe. There will be doubt clearing sessions. There'll be obviously fun in learning it, and there is a no-cost EMI also available. Everything which you need for ACCA is right here with MEPL. So what are you waiting for? Just enroll and be relaxed, because MEPL is very considerate about its students, and they would assure that you are not going to be lagged back in terms of your ACCA journey, right? Now, coming to the point of why ACCA. ACCA क्यों पढ़ना है? Right, so there are many advantages of ACCA. Let's look at the papers, but before looking at the papers, let me give you a few advantages of ACCA. Firstly, ACCA का जो paper structure है, that is giving you an opportunity to give exams one paper at a time, right? जैसे आपको कोई level clear नहीं करना है, एक साथ group papers देके आप individually papers देके पास हो सकते हो ACCA. Second big growth of ACCA is जो भी आप levels clear करो, और level में भी subjects individually clear करने हैं, okay? जो भी आप levels clear करो,
एवरी लेवल पे आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, एवरी लेवल पे आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है, right? And third and most important thing that ACCA provides you is ACCA has got tie up with more than 150 countries. That means अगर आपको इंडिया में या बाहर कहीं पे भी जॉब करनी है related to chartered accountancy, related to commerce, definitely ACCA is your push to that, right? So many advantages of doing ACCA. आप पूछोगे ACCA है क्या? So ACCA is Association of Chartered Certified Accountants, right? And it is based on IFRS, which is International Financial Reporting Standards, right? चलो quickly let's see क्या क्या levels हैं और क्या क्या papers हैं ACCA के. First level, which is called Applied Knowledge level, has got 3 papers, and they are Business and Technology, which is BP, Management Accounting, MA, Financial Accounting, FA. Second level is called the Applied Skill level, which has got 6 papers. Corporate and Business Law, which is something which is also like a CBE paper, computer based paper, जो आप MEPL के सेंटर पे जाके या कोई भी सेंटर पे जाके अप्रूव्ड लाइसेंस्ड सेंटर पे जाके ऑब्वियसली दे पाओगे, राइट? Performance management, taxation, financial reporting, audit and assurance, and financial management. And the last level, professional level, has got 4 papers, जिसमें से 2 पेपर कंपलसरी हैं, इनको essentials बोलते हैं, which is strategic business leader and strategic business reporting. Out of the rest of the 4 papers, आपको 2 पेपर सिलेक्ट करना है, ठीक है? So out of advanced financial management, advanced taxation, advanced performance management, and advanced audit and assurance, you have to pick up any 2 papers, okay? But SBL and SBR are compulsory papers. You have to attempt them. Clear? As I told you earlier, कि हर लेवल को क्लियर करके आपको एक कंफर्मेशन मिलता है, आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है, राइट? सो अगर आप फर्स्ट 3 पेपर्स क्लियर कर रहे हो तो यू विल बी गेटिंग अ डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम ACCA. अगर आपने 3 + 6 9 पेपर्स क्लियर किए हैं तो आपको मिलता है एक एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट फ्रॉम ACCA. एंड अगर आपने टोटल 13 पेपर्स क्लियर करे हैं तो आपको मिलता है ACCA अफिलिएट का सर्टिफिकेट, राइट? प्लीज कीप दिस इन माइंड. अगर आप 13 पेपर्स क्लियर करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ACCA हो गए हो. ACCA होने के लिए थोड़ी और मेहनत लगती है, एंड दैट इज a 20 hours of EPSM, Ethics and Professional Skills module, plus a 36 months of practice experience requirement, right? ये 36 months जो work experience ACCA मांगता है, that can be done from anytime before ACCA you have started or while you have started ACCA. अगर आपको first paper itself से अगर करना है work experience, you should please go ahead. आप definitely अपना PER complete कर पाओगे जल्दी, right? So very nicely done and very beautifully made 13 papers. Now while I was going through this, मुझे एक चीज और याद आई कि ये जो फर्स्ट 4 पेपर्स है, BT, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड लॉ, these are called on demand papers. On demand papers means these papers can be given whenever a student is ready with learning it, right? For example, you are a group of 5 students, ठीक है? इसमें से 2 स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा जल्दी अपना पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं एंड वो लोग बहुत ही जल्दी अपना एग्जाम देना चाहते हैं, राइट? तो वो स्टूडेंट्स अपना एग्जाम जब वो रेडी हैं तब वो अपना एग्जाम पेपर बुक करें और तुरंत ही पेपर दे दे. इट इज नॉट अ क्वार्टरली एग्जाम. ऑन डिमांड मीन्स जब स्टूडेंट डिमांड करेगा तब वो स्टूडेंट पेपर दे पाएगा, राइट? That is called a on-demand paper. And that opportunity you do have, my friends, for BT, MA, FA and law, right? So I hope it is pretty clear. Then coming to exemptions, ACCA has been giving exemptions to students who have studied little bit above the graduation for their exemptions. After 10th, अगर 10th के बाद आप ACCA शुरू कर रहे होंगे तो आपको एक भी पेपर का एग्जाम्शन नहीं है. 10th standard और 12th standard के बाद there is no exemption. You have to give all the 13 papers. Okay. The time that is required to finish it is minimum 2 years, and the annual fee for ACCA subscription is 116 GBP. That means pounds. अगर आपने BCom कंप्लीट किया है तो आपको 9 पेपर्स देने पड़ेंगे. आपको फर्स्ट 4 पेपर्स एग्जाम्प्ट हो जाएंगे. मतलब वो कौन से पेपर्स होंगे? BT, MA, FA and law. These 4 papers will be exempted, right? Total number of exemptions 4.
How much time you will take? Somewhere between 2 years to minimum 1.5 years, right? Annual fee for the first year will be 50% off, but the exemption that you will pay is going to be 15 pounds per exemption per paper, right? Look at this beauty of MEPL that is giving you, because MEPL is a silver learning partner, because MEPL has got a partnership with ACCA. आपको एग्जेम्पशन फीस कम पे करनी पड़ती है. अगर आप ACCA के वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल रियलाइज कि आपको 80 to 85 पाउंड्स एक पेपर का एग्जेम्पशन फी पे करना पड़ता है. लेकिन वही अगर आप MEPL के साथ करते हो तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 15 पाउंड्स पर पेपर. अमेजिंग. दैट इज व्हाट इज द फैसिलिटी दैट इज गिवन बाय MEPL, एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट, यूज इट. अगर आपने CA इंटर या CA IPCC क्लियर किया है, 8 एग्जाम्स देनी पड़ेगी. 5 पेपर्स का एग्जाम्शन मिलता है आपको, BT, MA, FA, टैक्स एंड AA. मिनिमम 1.5 इयर्स में पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, आपका एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाएगा, एंड 50% ऑफ, एंड द एग्जाम्शन इज 10 पाउंड्स पर पेपर. बीकॉम प्लस CA या CA इंटर या CA IPCC किया है तो आपको सिर्फ 7 पेपर्स देने पड़ते हैं, विच इज अमेजिंग. BT, MA, FA, law, tax and audit, this all is exempted. Can you believe? Almost half of your ACCA is exempted. You only have to give your performance management, financial reporting and financial management, and obviously the professional levels. But it is a super boom. You can finish in minimum 1 year if you have got only 7 papers to give. First year 50% off मिलेगा, और इसका भी प्राइस है only 10 pounds per exemption paper. अगर आपने CA में इंडिया किया है, having less than 5 years of work experience, then you get a 7 paper exemption and you have to give 6 papers. Minimum time to finish is 1 year. Same, you have a 50% off, and the price per exemption is 20 pounds per paper. अगर आपने CA में और CA में से कोई भी एक पोर्शन, कोई भी एक I could say कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है आफ्टर 2003, आपको सिर्फ 4 पेपर्स देने हैं. सिर्फ 4 माय फ्रेंड्स, ओनली 4 पेपर्स, एंड दीज आर ऑल प्रोफेशनल पेपर्स. बाकी के सारे 9 पेपर्स आर एग्जेम्प्टेड फॉर यू. 6 महीने में आप अपना ACCA कंप्लीट यूं कर दोगे, एंड यू विल बी इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी. फर्स्ट 50% ऑफ फर्स्ट ईयर का, एंड 20 पाउंड्स पर पेपर एग्जेम्पशन आपको मिलेगा, राइट? सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है ACCA के साथ. एंड अगर आप MEPL से एनरोल्ड हो तो देखना ही क्या है, राइट? MEPL आपको कितने ज्यादा डिस्काउंट्स दे रहा है एग्जाम्शंस पे, जो आप खुद से अगर ट्राई करो तो आपको नहीं मिलता है, राइट? बिकॉज MEPL इज अ लर्निंग पार्टनर, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? उनकी फीस भी काफी कॉम्पिटिटिव है, माय फ्रेंड्स. जस्ट हैव अ क्विक लुक. Sorry, let me just put myself somewhere here. Yes. Payable to MEPL classes, a combo fee is available. Applied knowledge के लिए all 3 papers का fee plus registration fee combination is 25,500. Individual papers सिर्फ 10,000 per paper आपको pay करना है. Applied skill, any 2 papers, tuition fees and registration fee combo 25,000. Individual paper 15,000. And strategic professional level, all 4 papers, tuition fee plus registration fee combo 60,000 only, and any 2 papers, tuition fee and registration for 35,000 only. Individual paper loge to 18,000 is their rate. Initial registration that you have to pay to ACCA is 30 pounds per paper. Applied skill के paper का fees around 100 pounds per paper होता है, and skill level का 123. Applied knowledge का 100 pounds and skill level का 123 pounds. SBL का फीस है, SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, जो प्रोफेशनल लेवल का पेपर है, उसकी फीस है $227, एंड बाकी सारी पेपर्स की $162. सॉरी, पाउंड्स, राइट? सो ACCA and MEPL reserves the right to change the fees from time to time, and obviously that is a sole discretion. But right now, my friends, you have an opportunity to get this beautiful course from MEPL at a very, very, very competitive price. Looking at what benefits they are giving you, obviously इससे अच्छा deal आपको market में नहीं मिलेगा, right? Let's talk more about ACCA and understand कि ACCA आपको और क्या देता है,
राइट? सो ऑब्वियसली जब आप लेवल्स क्लियर कर रहे हो तो लेवल 1 क्लियर करोगे या फिर फाउंडेशन क्लियर करोगे या आप फंडामेंटल लेवल क्लियर करोगे, यू विल गेट योर डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। अगर आप स्किल क्लियर कर रहे हो तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है। पूरा एसीसीए कंप्लीट कर लिया तो कहना ही क्या है, देन यू आर डन विथ योर एसीसी अफिलिएट। एंड अगर आपने पीआर कंप्लीट कर लिया, जैसे वर्क एक्सपीरियंस है 3 साल का, और अगर आपने अपना ईपीएसएम कंप्लीट कर लिया, देन यू आर ऑफिशियल एसीसीए माय फ्रेंड, ऑफिशियल एसीसीए। But apart from being ACCA, ACCA also has got tie-up with somebody else, which is Oxford Brookes University. Oxford Brookes University का एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग। अगर आपको आपका सेकेंड लेवल करते हुए, विच इज योर स्किल लेवल करते हुए, अगर आपको लगता है कि आपको ये बीएससी का डिग्री चाहिए, तो यू हैव टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट विच इज कॉल्ड अ रैप, and you have to submit it to Oxford Brookes University. And if you pass it, you will get your degree in BSc in Applied Accounting from the famous Oxford Brookes University, right? After you finish all the papers, definitely you also have a scope of doing University of Masters in London का professional accounting का course. So अगर आप देखो तो MEPL के साथ जो आप ACCA करोगे, it is not just a international course of doing one degree, लेकिन इसके साथ साथ आप वेरियस अदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हो अपने आप के लिए, अपने करियर के लिए, राइट? जैसे ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स का बीएससी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोफेशनल अकाउंटिंग, राइट? आई थिंक सुपर्ब अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक व्हाई नॉट, राइट? एसीसीए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, MEPL इतना पुराना कंपनी है और इतने अच्छे से इतने सालों से इट्स सक्सेसफुली गोइंग heaps and places and making sure that all the students who come out from them are coming out with flying colors. So what are we waiting for, right? Let's enroll to MEPL for the ACCA course and let's start our journey to a world-class global ACCA or a chartered accountancy degree, right? So that's all about understanding MEPL and also. Hello, my friends. Welcome to the mission series of performance management. हमने अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा जिसमें we spoke about MEPL and we spoke about ACCA. Now let's go to the actual body of the mission series and let's start with it. Okay. So before explaining the mission series and before getting into the information of mission series, I want to tell you that मैं इसको कैसे आपको बताऊंगी and how I'm going to be going about it. Okay. So the first thing that I'm going to do is I'm going to give you a little introduction कि कितने sections है, exam pattern क्या है, ताकि आपको एक idea आ जाए कि कैसे exam देना है. Okay. After that, I'll be going through all the chapters that are given in the Kaplan books. Okay. And from every chapter on this word file, I'm going to write the important things. राइट? तो जब आप मुझे सुन रहे हो, जब आप मुझे देख रहे हो फॉर दिस मिशन सीरीज, आपको पेन और बुक लेके बैठने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारा ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगी, बाद में बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर देख लेना द वीडियो टाइम एंड अगेन, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट पेपर पैटर्न पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो पीएम का जो पेपर है ये एक स्किल लेवल का पेपर है, राइट? And exams will be in March, June, September and December. ठीक है? So 4 बार एक साल में एग्जाम्स होती है, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, राइट? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? पेपर कैसा होता है, पेपर पैटर्न कैसा है, राइट? सो देयर आर गोइंग टू बी 3 सेक्शंस. सेक्शन ए इज ऑफ 30 मार्क्स, जहां पे आपको 15 MCQ है ऑफ 2 मार्क्स ईच. ओके. सेक्शन बी इज ऑफ 30 मार्क्स, जहां पे आपको 3 मल्टी टेस्ट क्वेश्चंस आएंगे. ओके. मल्टी टेस्ट मीन्स सिनेरियो बेस्ड questions.
Each MTQ will be of 10 marks, having 5 questions in each MTQ of 2 marks. ठीक है? And the last one is section C, जहां पे टाइपिंग क्वेश्चंस है, of 20 marks each. I would say 2 typing questions. 2 typing questions of 20 marks each, total 40 marks. Right? So section E आपका हो गया 30 marks का, section B आपका हो गया 30 marks का, and section C is 40 marks. Okay? Total paper is of 100 marks, 3 hours of typing and answering the questions, 10 minutes of reading instructions. Right? So ऐसे पेपर पैटर्न चलेगा. 100 marks of paper है, 3 hours of typing and answering the questions and 10 minutes for reading instructions only. Okay? ये 10 minutes जो आपको एक्स्ट्रा दी गई है, इसमें आप बिल्कुल लिख नहीं पाओगे, आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस पढ़ पाओगे. Right? No negative marking. Right? And this is going to be a computer based. Right? So paper pattern I have explained to you. Performance management एक skill level का paper है. इसमें exams every quarterly होगा, starting from March. So March, June, September and December. Section A 30 marks का होता है. 2 marks के MCQs हैं यहाँ पे जो आपको solve करने हैं. And negative marking नहीं है, but try करो कि सारे answers ही correct आए. And obviously जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं मेहनत कर रही हूँ, आप मेहनत कर रहे हो, तो definitely pass तो होना ही है. Section B is going to be 30 marks also, but it is going to be 3 multi-test questions or scenario-based questions. ये कैसे होते हैं मैं बताती हूँ. There is going to be 1 question, okay, and that question उसको base लेके there are going to be like 5 individual 2 marker question based on that one big scenario or a small scenario for 10 marks. So 5 into 2, 10 marks. और ऐसे 3 MCQ. So 5 into 2 into 2, 5 into 2 into 3, 30 marks. सेक्शन सी एक टाइपिंग कंप्लीटली टाइपिंग पेपर है, सेक्शन है जिसमें 220 मार्क्स का क्वेश्चंस है. मेजरली इट इज अ मिक्स ऑफ थियोरी एंड इट इज अ मिक्स ऑफ कैलकुलेशंस. टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें 3 आवर्स आपको टाइपिंग एंड आंसरिंग के लिए दिया जाता है, 10 मिनट्स आपको रीडिंग के लिए दी जाती है. नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और सारे ही पेपर्स कंप्यूटर पे ही देने हैं, कुछ भी पेन एंड पेपर यहाँ पे नहीं होना है. ठीक है? So that is all about paper pattern. इसको quickly एक बार देख जाओ and then we can start with the actual revision. I hope आपने देख लिया हो. Let's scroll down. Chapter number 1, revision of management accounting और MA topics. Now अगर आप मुझे पूछो कि ये चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं, तो frankly speaking नहीं आते हैं ज्यादा.
ओके ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला सब्जेक्ट नहीं किया है बिकॉज उनको एग्जेम्प्ट हो गया है, फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल ये चैप्टर पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ बेस फॉर यू फॉर स्टडिंग फर्दर इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इन दिस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट। ओके सो क्विकली इसको देख जाते हैं क्या आता है। मतलब अगर आप एग्जाम किट भी खोल के देखेंगे तो यू वुड रियलाइज के लास्ट जो एमए का क्वेश्चन पूछा गया था ये चैप्टर में से पर्टिकुलरली, दैट वाज बैक इन आई थिंक 2012 और 2009, राइट। उसके बाद इसका क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पहले नहीं पढ़ी है बिकॉज आप एग्जेम्प्टेड हो उसमें, सो आई वुड स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेकमेंड कि ये वाला चैप्टर आप एक बार ही देख जाओ, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक ब्रीफ कर देगा कि आगे जाके कॉस्टिंग में क्या आना है। ठीक है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर। आप बोलोगे कि अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों पढ़ना है। देखिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंट पे बेस नहीं करती हैं। मोस्टली कोई कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपका फ्यूचर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में जो आप आगे पढ़ोगे ना उसका बेस बनाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम आगे के सब्जेक्ट्स या चैप्टर्स के लिए बेस बना रहे हैं, दैट इज ऑल, राइट। अब आप पूछोगे ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर में बेसिकली यू शुड नो व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, you should know what is marginal costing and its calculation. Absorption costing, absorption costing में आपको आना चाहिए over and under absorption, right? And of course the calculations, right? So ये सारी चीजें आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर से आनी चाहिए। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, जो बेसिक अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रहता है वो, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉस्टिंग बोलते हैं इनको, सो वो आपको आने चाहिए। देन यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज अ फिक्स्ड बजट, क्योंकि जो बजटिंग का चैप्टर है इसके लिए ये बेस बनेगा। फ्लेक्सिबल, एंड लास्टली योर फ्लेक्स्ड बजट, राइट। सो इतनी चीजें आपको ये चैप्टर में से समझना इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिक्स्ड बजट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट क्या है और फ्लेक्स्ड बजट क्या है, राइट। उसके बाद का जो चैप्टर है हमारा दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, राइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपको फ्यूचर में काफी हेल्प करता है, स्पेशली अगर आप एपीएम सिलेक्ट करते हो, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये एक अच्छा बेस बनता है उसके लिए, राइट। हम यहाँ पे क्या सीखेंगे, we will be learning the roles of information, that means what is the difference between data and info, the characteristics of a good information, that means what is a good information, recording transactions and decision making, cost and benefit, जैसे कि अगर आप एक information gather करते हो, right, so what are the cost, how much is costing you and what are the benefits of it, right, like cost classification, indirect cost of producing information, benefits of the new information system and cost benefit analysis. So all this is something which is the cost and benefit of information. कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर होती है, सो इंटरनेट, इंट्रानेट, वायरलेस टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर होती है। सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न, जहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो सिक्योरिटी इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न, जहाँ पे इफ द कंपनी डज नॉट हैव अ गुड सिक्योरिटी ऑफ इट्स इंफॉर्मेशन, देयर आर चांसेस कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, राइट। कंट्रोल्स एंड द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर होती है, राइट। सो ऑल दीज आर कंप्राइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स, राइट। सो हम यहाँ, हमको यहाँ क्या आना चाहिए, राइट। अगर आप देखो तो कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन,
obviously, like difference between data and information. Difference between data and information, then different types of information, how to safeguard and various sources of information. Right, so this is something that is beneficial, that is something जो एग्जाम में आपको या फिर ये पर्टिकुलर चैप्टर से आपको आना चाहिए. Okay, जैसे cost and benefit of information, difference between what is a data and what is an information, different types of information, how to safeguard information, and various sources of information. Right, so these are the things that you should know pertaining to that chapter. अब आप पूछोगे कि इसमें से क्या क्या आएगा मैम, या फिर ये चैप्टर कितना वेटेज का होगा. राइट, सो ये चैप्टर्स बिग क्वेश्चंस में मोस्टली नहीं आते हैं, लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट अ 2 मार्कर, just a 2 marker from this particular question, and same this particular chapter, and same is the logic for the earlier chapter also, which was like a recap of management accounting. Right, then comes system, information system and data analytics. But before that, take a good look at what is required for, or what is important for chapter 1 and chapter 2. So I hope आपने ये 2 चैप्टर का देख लिया है. Let's go to the next chapter, which is chapter 3. So chapter 3 में क्या important है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा एनालिटिक्स. आपने यहाँ पे अगर आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया है, सो इन दैट वी यूज टू डू टीपीएस, एमआईएस, ईएस, डीएसएस, ये सारी चीजें यहाँ पे रीब्रीफ करी हुई है, यहाँ पे वो चीजों को वापस एक्सप्लेन करा हुआ है. राइट, सो इसमें से chapter 3, right, different types of information, different types
of processing systems, राइट। इसमें क्या क्या आ गया अपना, TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सपोर्ट सिस्टम, DSS, राइट, एक्सेट्रा। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद वी आर देन मूविंग टू द data analytics. Okay, and when we are moving into data analytics, that is where we are getting more information about how to handle data, right? Data analytics is focusing on how to analyze and segregate data, right? And then अपना big data का काफी information है, so sorry, not bug data but big data. So ये सारी चीजें यहाँ पे हम करेंगे। चैप्टर 3 भी मोस्टली एमसीक्यू में हमें आया जाता है। इट्स मोस्टली समथिंग दैट कम्स इन एमसीक्यूज। 2 marks मैक्सिमम 5 marks इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस चैप्टर। इससे ज्यादा ये चैप्टर में इतना वेटेज नहीं है, राइट। आप नोटिस करोगे तो मैंने सारे चैप्टर्स के अब तक मैंने आपको एक रफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि किसका कितना वेटेज है, राइट। बट दैट डज नॉट एवर मीन कि आप उसको कम या ज्यादा करो। ये जस्ट एक गाइडलाइन है। लुकिंग एट पास्ट पेपर्स, लुकिंग एट द एग्जाम किट, आई जस्ट अंडरस्टूड के कौन से चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस आते हैं या कितने मार्क्स का उसको वेटेज है। Right, so I'm just replicating that information here, as simple as that. Okay, let's go to the next chapter. Now ये वाला चैप्टर है ना, यहाँ से सारा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, राइट। एडवांस कॉस्टिंग मेथड हमने फर्स्ट चैप्टर में जो किया था वो थे ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड्स, और हम जो अभी सीख रहे हैं उसको बोलते हैं एडवांस्ड कॉस्टिंग मेथड्स। एडवांस्ड कॉस्टिंग मेथड्स से क्वेश्चंस आते हैं, और देयर हैज बीन वन सेक्शन सी 20 मार्क का क्वेश्चन दैट हैज कम फ्रॉम दिस, बट क्वाइट अ फ्यू इयर्स अगो। ओके, सो मैं बताऊंगी कि इसका वेटेज, ये चैप्टर का वेटेज मिनिमम 2 मार्क्स से लेके मैक्सिमम 20 मार्क्स तक हो सकता है, राइट। सो it is, I would say, an important paper, important topic in terms of chapters or in terms of exam point of view, right? यहाँ पे क्या क्या सीखने मिल रहा है हमको? We will be learning activity based costing, activity based costing में advantages, disadvantages, calculations, then its comparison with absorption costing. आई होप जब तक आप ये मिशन सीरीज देख रहे हो आपने मेरे जो चैप्टर वाइज वर्क है वो भी आपने देखा होगा, राइट। सो उसमें मैंने आपको क्लैरिफाई किया है व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाउ टू कंपेयर इट विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सेट्रा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज समथिंग विच इज मेड अप फ्रॉम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ऑल्सो, राइट। सो इसको ज्यादा और हम क्लैरिफाई एंड करेंगे। सो ABC is based on activity, pool and drivers, where each and every activity is justified, right? So यही होता है ये वाले टॉपिक में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो पहला वाला चैप्टर है
अगर आप वो चैप्टर से कंपेयर करो तो इसमें काफी सिमिलैरिटीज है। लेकिन अगर बाय द टाइम यू आर सीइंग इट, एज आई सेड, आपने ये बुक थरोली कर ली होगी और मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, तो यू वुड रियलाइज कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप टोटल ओवरहेड्स को डिवाइड करते हो विथ वन सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज प्रेफरेंस। अगर कंपनी लेबर इंटेंसिव है तो लेबर से करते हो, अगर मशीन इंटेंसिव है तो मशीन से करते हो। बट when it comes to activity based costing, activity based में इंडिविजुअल एक्टिविटीज को एक कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्ट किया जाता है और वो ड्राइवर क्यों हो रहा है उसको एक कॉस्ट पूल के साथ रिलेट करते हैं, राइट। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हैज गॉट अ बेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि चैप्टर 1 पढ़ना आगे के सब्जेक्ट्स, आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। Absorption costing is a base for activity-based costing, and activity-based costing works in the same pattern, but has got its own difference, and which is a very, I would say, a very appropriate difference in this modern era. राइट, अब इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है कि इट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल कि आप एक ही टाइप का मेथड यूज करो एंड उससे आप अपना वर्क कंटिन्यू करो। ऑब्वियसली देयर हैज टू बी एवरी फंड दैट यू आर स्पेंडिंग, राइट, जो कंपनी में एवरी फंड स्पेंड करते हो वो करेक्टली डोमिनेटेड होना चाहिए, वो करेक्टली वैल्यू ऐड करना चाहिए, राइट। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज बेस्ड ऑन कॉस्ट पूल्स एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, एंड जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्टिविटी बेस्ड के साथ डिवाइड करते हो वो सारी ही वैल्यू एंड नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में मोटी मोटी डिवाइड हो जाती है, एंड देन दोज वैल्यूज आर जस्टिफाइड। क्योंकि ठीक है, अगर कंपनी को एक ट्रक का एक्सपेंस करना है तो वो क्यों करता है, राइट, वो आपके प्रोडक्ट को क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, राइट, एंड उस पे हम कितना पेमेंट डाल रहे हैं, कितना एक्सपेंड डाल रहे हैं, राइट। इससे पता चलता है कौन सी एक्टिविटी का क्या प्राइस है, एंड इन फ्यूचर अगर वो एक्टिविटी एलिमिनेट भी करनी है तो कंपनी कैन डू इट नाइसली। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। देन कम्स योर थ्रूपुट अकाउंटिंग। थ्रूपुट अकाउंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप ये थ्रूपुट अकाउंटिंग का कंसेप्ट मेरे वीडियोस में देखोगे और समझोगे तो उससे रिलेटेड आगे दो कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, राइट। थ्रूपुट इज बेसिकली अश्योरिंग कि जो कंपनी के पास एक बॉटलनेक है, जो एक स्कैर्स रिसोर्स है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है, राइट। सो थ्रूपुट इज समथिंग विच इज ओनली बेस्ड ऑन मटेरियल कॉस्ट, which is a variable cost. It does not take labor as a variable cost because it thinks कि short term के लिए तो labor fix ही होता है। It works on the logic of throughput, finding the throughput per unit, which is sales minus material cost, and TPAR, throughput per accounting ratio का formula है TPAR, throughput per unit divided by products time on the bottleneck resource। ये जो TPAR है ये बहुत ऑफन एग्जाम में आता है, और चैप्टर 4 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का वेटेज मैं बताऊंगी समवेयर अराउंड 2 मार्क्स, 4 मार्क्स तो मिनिमम, 2 मैक्सिमम 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये चैप्टर में से आ सकता है, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडिविजुअली आपको कोई भी एडवांस कॉस्टिंग मेथड टेस्ट की जाएगी, इधर इन योर सेक्शन ए और बी, या फिर आउट ऑफ योर सेक्शन सी ऑल्सो, अगर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो लोग TPAR पे पूछ सकते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थ्रूपुट में पर यूनिट फाइंड आउट करना होता है, विच इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस डायरेक्ट, राइट। TPAR and the set of the ratios is very important, right? Proper throughput costing, stepwise calculation,
can also come in exam. ठीक है, right? So throughput, as I said, बहुत important topic है, छोटा बड़ा कोई भी question can be asked from this particular chapter, right? इसके बाद और एक छोटा सा topic है target costing का. Target costing भी important है, लेकिन it is a small topic, right? So small topic है, so इतना weightage नहीं है compared to throughput, but yeah, it is there, it is recently given. Environmental costing, where we are discussing the benefits and the ways in which environmental costing is useful. So where we are discussing importance and types of environmental cost. Right? And lastly, you have life cycle costing. Life cycle costing में क्या important है? So I would say उसका एक concept का thorough study, calculations, ये दो चीजें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट? सो आई वुड से बेसिकली चैप्टर नंबर 4 से आपका ज्यादा वेटेज वाले सम्स या ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर शुरू हो जाते हैं. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर्स, ग्रुप कॉस्ट इनटू कॉस्ट पूल्स, estimate the cost driver's volume, calculate the overhead rate per cost driver, and apportion the cost on the basis of cost drivers. Throughput accounting mein materials are the only variable cost. So the formula for throughput is also sales minus direct material or materials. TPAR मैंने बोला कि उसका क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन ए या बी में 2 मार्क के क्वेश्चंस TPAR के आते हैं. 3 फॉर्मूलाज का सेट है. प्लीज 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 याद करके जाना, सुपर इंपॉर्टेंट है और सुपर एसेंशियल भी. Target costing, set selling price based on the market competition, deduct required profit to identify the target cost, and how to close the gap. Right? So target cost में एक small topic है, लेकिन और भी एक information of ways in how to close the gap. Right? Environmental costing में you discuss the issues business face in the management of environmental cost. Describe the different methods a business may use to account for its environmental cost. And life cycle costing में concept and calculation है. ये सब चीजें बहुत बहुत important है. आपको please 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 पढ़ के जाना चाहिए for scoring good in your performance management class. Right? Performance management paper. 2 मिनट लीजिए, चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंस को देख जाइए एक बार, and then we will go further. Okay?
हे गाइस, आई होप आपने देख लिया होगा चैप्टर 4 से इम्पोर्टेंट शुरू हो रहा है। एंड यहाँ पे मार्क्स वेटेज कैन गो फ्रॉम मिनिमम 2 मार्क्स टू मैक्सिमम अ फुल क्वेश्चन ऑफ 20 मार्कर। सो बेटर है कि यहाँ से हम थोड़ा हमारा पिकअप करें और हमारे चैप्टर्स को और थरोली करें, राइट? Before I go to the next chapter, let me give you one piece of very important information. अगर आप सिर्फ स्टडी टेक्स्ट करके जाओगे तो डोंट एक्सपेक्ट टू पास। ओके, स्टडी टेक्स्ट आपके लॉजिक्स क्लियर करती है, लेकिन आप पास कब होते हो? जब आप खुद से मॉक पेपर सॉल्व करते हो और आप एग्जाम किट भी बहुत थरोली करके जाते हो, राइट? बिकॉज कैपलिन का जो एग्जाम किट है, दिस इज अ मिक्स ऑफ ऑल द पास्ट पेपर्स एंड इट इज गोइंग टू गिव यू हीप्स ऑफ नॉलेज ऑफ केस का टाइप के क्या वेराइटी के क्वेश्चंस पिछले कई सालों में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर में पूछे गए हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 5, राइट? मैंने आपको जब थ्रूपुट बताया था तभी मैंने आपको बताया कि आप अगर थ्रूपुट के पैटर्न या लॉजिक को अंडरस्टैंड करो तो आपको आगे इजी हो जाता है, राइट? Cost volume profit analysis is where you are going to have a lot of formulas, okay? And मैं obviously यहाँ पे सारे formulas jot down कर जाऊंगी, लेकिन when we talk about cost volume profit analysis, it is also known as break even analysis. Basically एक कंपनी का सिचुएशन जहां पे कंपनी का प्रॉफिट जीरो होता है, लेकिन जहां पे कंपनी इतना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर देती है कि उसके जो कॉस्ट है वो मेकअप हो जाते हैं, इट्स जस्ट मेकिंग अप फॉर द कॉस्ट, राइट? सो दैट स्पेस वेयर द कॉस्ट मीट्स द इनकम is called break even or cost volume profit, राइट? इसमें आपके पोर्शन में क्या रिलेटेड है? यू हैव अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक इवन, यू हैव अ मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन, एंड यू हैव गॉट द लिमिटेशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? क्विकली लेट्स गो टू द फॉर्मूलाज, क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस में काफी सारे फॉर्मूलाज है। सो मैं यहाँ पे सारे आपके फॉर्मूलाज जॉट डाउन कर जाऊंगी, तो आपको एक क्विक रिविजन हो जाएगा सारे फॉर्मूलाज का। ब्रेक इवन का क्वेश्चन कहाँ आता है, कितने का आता है? सो ब्रेक इवन इज अ एवरेज चैप्टर। आप यहाँ से 2 मार्क्स टू 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आई हैव नेवर सीन अ क्वेश्चन ऑफ ब्रेक इवन इन योर एग्जामिनेशन, राइट? सो पहले हम ब्रेक इवन एनालिसिस का सिंगल प्रोडक्ट देख लेते हैं। सो जहाँ पे काफी फॉर्मूलाज है, एक्चुअली आई शुड हैव रिटन टू। सो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, राइट? सो उसका फॉर्मूला है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। जिसको पता नहीं है कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, मैं यहाँ डाल रही हूँ। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ऑल्टरनेटिव formula for contribution is equal to fixed cost plus profit। आप एक स्किल लेवल का पेपर दे रहे हो, आपको चांसेस है कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाए, राइट? इसीलिए मैं आपको ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज दे रही हूँ। कंट्रीब्यूशन 2 वे से फाइंड आउट कर सकते हो, इधर इट इज सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर इट इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? जो भी आपके क्वेश्चन में दिया है वो इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करो एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फाइंड करो। ये कंट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन आप ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट के लिए यूज करोगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट का फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। The next formula here is level of activity to earn a required profit. राइट? सो अगर आपको इसका फॉर्मूला, इसका वैल्यू फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है। आप लोगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, एंड ये सारा जो इंफॉर्मेशन है इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, you divide that by contribution.
राइट। एग्जाम जब आपका ऑन होता है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू वे से फाइंड आउट हो जाता है, सेल्स प्राइस एंड वेरिएबल से, या फिर फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट से भी। लेवल ऑफ एक्टिविटी टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट, कभी रिक्वायर्ड प्रॉफिट लिखा होगा, कभी डिजायर्ड प्रॉफिट लिखा होगा, कभी वांटेड प्रॉफिट लिखा होगा। लेकिन अगर आपको एक नंबर ऑफ यूनिट्स बनाने हैं जिसमें कंपनी का फिक्स कॉस्ट भी कवर अप हो जाए एंड कंपनी के प्रॉफिट्स भी अर्न हुए, तो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। द नेक्स्ट वन is your margin of safety, right? इसको कभी कभी MOS भी बोला जाता है, एंड ये वैल्यू होती है इन परसेंटेज। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है मैं यहाँ लिख देती हूँ। इट इज बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, this thing comes in one, actually just, and then you divide this value with the budgeted sales, you close your bracket and then you multiply this value with 100, right? Margin of safety क्या होता है? Basically it is a threshold between how much company is producing right now and what is its break even. ब्रेक इवन से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्फॉर्म करना या फिर फाइंड आउट करना इज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स इज टोटली बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड इनकम, राइट? अगर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस पर यूनिट कम हो जाता है तो इनकम कम हो जाएगी, राइट? सामने सामने अगर कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से ब्रेक इवन जो लाइन है वो आगे पुश हो जाती है, राइट? या फिर इनकम कम होने की वजह से भी ब्रेक इवन लाइन आगे पुश हो जाती है। सो दीज टू थिंग्स हैव टू बी अश्योर्ड कि वो अपने बजटेड सेल के एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड में है, राइट? नहीं तो फिर कंपनी को रियलाइज ही नहीं होगा कि वो सेफ्टी मार्जिन के बाहर निकल चुकी है, right? So that is the formula of margin of safety. Budgeted sales minus break-even sales. The complete value is divided by budgeted sales and multiplied by 100. Next formula, CS ratio बोलते हैं इसको, contribution divided by sales, right? Contribution is your sales price minus variable cost. Contribution minus variable cost divided by, sorry, contribution is sales price minus variable cost or fixed cost plus profit, and that value is then divided by the sales value. This CS ratio helps us to find out the break-even point in sales revenue, right? So it is which is equal to fixed cost divided by, I'm just going to put this in a bracket, CS, right? जब हमको ब्रेक इवन पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स फाइंड करना था तो हमने क्या करा? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन किया। अगर वही चीज हमको रेवेन्यू में फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे फिक्स कॉस्ट बाय सेल्स रेवेन्यू, सॉरी बाय सीएस रेशियो। फिर आ जाता है अपना लास्ट फॉर्मूला विच इज सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट, राइट? तब आप क्या करते हो? आपने यहाँ पे क्या किया था? लेवल ऑफ एक्टिविटी टू अर्न रिक्वायर्ड प्रॉफिट में आप क्या करते हो? फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। सेम लॉजिक यहाँ हम यूज करेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट बोलो, डिजायर्ड प्रॉफिट बोलो, टारगेटेड प्रॉफिट बोलो, सारा एक ही है, राइट? एंड देन यू डिवाइड द होल लॉट विथ योर CS, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, राइट? सुपर, इतने सारे फॉर्मूलाज है इसमें, बस ये फॉर्मूलाज याद कर लो। आई डोंट थिंक आपको कोई भी इसमें ड्रॉबैक्स आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर रही हूँ ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए यहाँ पे। इसमें फॉर्मूलाज ज्यादा है लेकिन फॉर्मूलाज इंटर रिलेटेड एंड लॉजिकल है, ओके?
सो आप देख के डर मत जाना प्लीज, इसको रिलेट करो पहले फॉर्मूला से एंड देन उसको यूटिलाइज करो, बेटर बेटर आउटपुट आपको आएगा, राइट? इसको देख जाओ, 5 मिनट्स क्विकली देख जाओ एंड देन वी आर गोइंग टू डू द मल्टी प्रोडक्ट, जो बहुत ही सिमिलर है, इससे कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, हम देख लेंगे, ठीक है? जस्ट क्विकली हैव अ लुक, 2 मिनट्स में। आई होप आपने देख लिया हो। दो ही, सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट है व्हेन यू आर डूइंग अ मल्टी प्रोडक्ट, एंड विच इज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, एक तो यही लिखा हुआ है वेटेज एवरेज सीएस रेशियो, राइट? ये एक आपका फॉर्मूला है जो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और इसके बेस पे जो आपका यू नो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है, वो भी थोड़ा उसका एंगल चेंज हो जाता है। बाकी सारा ही लॉजिक सिंगल प्रोडक्ट जैसा ही है। सो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि ओ गॉड इतने सारे फॉर्मूलाज आ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूलाज को लॉजिकली अंडरस्टैंड करो, बहुत मजा आएगा, आई प्रॉमिस। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी से आप अपना पेपर दे पाओगे, राइट? सो चलिए इसके सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, विच इज मल्टी प्रोडक्ट रेटियो एनालिसिस। इसमें सिर्फ दो तीन फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट इज, जैसे हम नॉर्मल सीएस रेशियो फाइंड आउट करते थे, यहाँ पे होगा वेटेड सीएस रेशियो, राइट? जो होगा टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, राइट? यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सीएस रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कंट्रीब्यूशन पर सेल करते थे, यहाँ पे क्या करोगे, टोटल वर्ड यूज कर दो, क्योंकि मल्टी प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन फाइंड आउट कर रहे हो, राइट? सो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट 1 2 3 4 जितने भी आपके सपोज 5 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो सबका ही टोटल करना है कॉन्ट्रीब्यूशन का, सबका ही सेल्स रेवेन्यू का टोटल करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड योर सीएस रेशियो। सो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। इसके बाद आपका ब्रेक इवन आएगा फॉर मल्टी प्रोडक्ट and that also in sales revenue, which is equal to fixed cost divided by weighted CS ratio, right? Finally, अगर आपको level of, or I would say sales required to earn a target profit करना है, तो is equal to
वही हमारा पहले वाला फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ये सारी चीजें किससे डिवाइड होती है? वेटेज CS रेशियो, राइट। मैंने बताया ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ वेटेज यूज करना है। वेटेज मतलब जब मोर देन वन प्रोडक्ट होते हैं तो क्या होता है, आप सारे प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन और सेल्स एड अप करोगे, बस आपने वही करना है इधर, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट योर आंसर, राइट। इनको भी देख जाओ एक बार, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो टेक 2 minutes एंड गो थ्रू इट। वाओ, 5 chapters डाउन, हाँ। काफी अच्छा अपना रिकॉर्ड है। So what we have done now, yeah, 5 chapters down। हमने क्या करा, हमने 5 chapters का एक क्विक इंट्रोडक्शन कर दिया, क्या क्या आएगा। एंड ब्रेक इवन एनालिसिस में एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस नहीं कर सकते, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका वेटेज समवेयर अराउंड 2 marks, 5 marks, 7 marks, 10 marks आ सकता है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ज्यादा है, लेकिन हाँ सारे रिलेटेबल फॉर्मूलाज है, ऐसा नहीं है कि आपको मक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक बार आप कंसेप्ट समझ लोगे तो आपको काफी काफी इजी हो जाएगा इसके सम्स करने के लिए। ऑब्वियसली मैंने जब हमारा हमारा क्लासेस हैं, वो क्लासेस में मैंने ये सारे सम सॉल्व किए हुए हैं, तो आपको इसका एक मेथड भी वहां से अच्छे से आइडिया आ जाएगा। ओके, सो दैट इज ऑल, एंड लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। चलो, आई होप आपको चैप्टर 4 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू chapter number 5। Now, chapter number 5 is planning with limiting factors. इसका इंफॉर्मेशन अगेन वेरी रिलेटेड टू थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड बॉटलनेक अकाउंटिंग। हमने पहले वो मेथड किया था। ओके, सो मैं एक ब्रीफ कर देती हूँ। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स में हमने क्या क्या किया था। प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स में बेसिकली दैट इज अ सिचुएशन वेयर कंपनीज हैव गॉट एनी रिसोर्स व्हिच इज स्केर्स। ओके, स्केर्स मतलब वो आपके पास क्वांटिटी में कम है, right? It can be material, it can be labor, it can be funds sometimes. Okay, so how to deal when there is
quantity or resource which is scarce, right? So हम क्या करते थे, पहले हम उसमें contribution find out करेंगे. सबसे पहले तो हम कौन सा scarce resource है वो find out करेंगे. Then after we will be finding the contribution. After finding the contribution, we will be ranking the product based on which product is giving you the highest contribution compared or divided by the scarce resource. And after that, we will be allocating the scarce resource in the rank wise. So highest ranked product will get resources first and the least ranked product will get the resources less, right? So वैसे हमने planning with limiting factors किया था. Now जो मैंने आपको अभी मेथड बताया है, which is very very useful for a single product, right? अगर मल्टी प्रोडक्ट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आपको लीनियर प्रोग्रामिंग करके छोड़ देना है. लीनियर प्रोग्रामिंग मीन्स defining the variables as x and y and putting it into a linear program and leaving it. Please check my videos of this chapter to understand how to do linear programming. लेकिन काफी सिंपल होते हैं. Now in the textbooks you would have also found out that graphs दिए गए हैं क्वेश्चन में, textbook में graphs दिए हैं. So you don't have to actually draw the graphs in your examination, but आपको graphs देख अभी मैं बताऊँ recent 5 years में there have not been any graph related question, or in the coming chapters you will see decision tree. Okay, so decision tree related questions या graph related questions काफी कम हो गए हैं एग्जाम में. They are focusing on other things which are non-pictorial basis, right? So planning with limiting factors में single limiting factor है तो steps करने हैं. I'm obviously going to put down the steps right now. And अगर linear programming है, that is something which we will be using for multi-limiting factors. Okay. Something which is very important in this chapter and commonly asked in the exam is shadow prices and slack prices. Shadow price is where the company has called dual price for a product, okay, because it is in scarcity. And slack price is where company has underutilized its resources because they are excess than what the demand is for the product, right? एक quick इसकी भी notes बना देते हैं. Just exact terms आपको textbook में से ही दूंगी. राइट, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें है वो है प्लानिंग विथ वन लिमिटिंग फैक्टर सिमिलर पैटर्न टू थ्रूपुट काउंटिंग और bottleneck काउंटिंग, right? Then steps for calculating planning with limiting factors. One limiting factor. One limiting factor means जैसे for example for example अगर मशीन स्कैरसिटी में है, ओके, या फिर डायरेक्ट मटेरियल स्कैरसिटी में है, या फिर लेबर स्कैरसिटी में, एनीथिंग दैट इज इन स्कैर्स बट सिंगल स्कैरसिटी इज कॉल्ड अ सिंगल लिमिटिंग फैक्टर, राइट? सो स्टेप 1, आइडेंटिफाई द scarce resource. Step 2, calculate the contribution per unit for each product. आप थ्रूपुट अकाउंटिंग में क्या कैलकुलेट करते थे? आप थ्रूपुट पर यूनिट कैलकुलेट करते थे, और थ्रूपुट पर यूनिट कैसे आता है? थ्रूपुट पर यूनिट इज योर सेलिंग प्राइस माइनस योर डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ओनली, राइट? लेकिन यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज गोइंग टू बी सेलिंग प्राइस माइनस ऑल द वेरिएबल कॉस्ट, ओके?
कंट्रीब्यूशन के मैंने दो फॉर्मूलाज आगे नोट्स में लिखवाए हैं. वन इज सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड इज फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ओके. स्टेप 3, calculate the contribution per unit of the gas resource for each. Right. Step 4, rank the products in order of the contribution per unit of the gas resource. And finally, step 5, allocate resources using this ranking and answer the question. Right? Planning with limiting factor. Single factor में आपको ये करना है. Identifying the scarce resource. Calculate the contribution. Contribution कैसे करना है मैंने दिखाया है. Then you find out your contribution per unit of each scarce resource for each product. Rank the products and allocate it. Right? अब अगर आपको ये तो अपना हो गया limiting factors, where there is one limiting factor. What do you do when there are several limiting factors? Steps for calculating, planning with limiting factors, more than one. Or multiple limiting, right? अगर more than one या multiple limiting factors है तो आप क्या करते हो? Step 1, define the variables. Step 2, define and formulate the objectives. Step 3, formulate the constraints. राइट. सो आपको अपनी एग्जाम के लिए यहाँ तक ही स्टेप्स करने हैं. अगर आप कैपलन का बुक ओपन करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसमें ग्राफ बनाना भी दिखाया है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर पोर्शन. तो प्लीज डोंट एग्जैजरेट ऑन इट, डोंट गेट स्कैर्ड विद इट. ओके, you just need to define the variables, formulate the objectives and formulate the constraints. Please look at my videos of this chapter to get better understanding of what I mean by linear programming. Okay, let me just quickly write here linear programming also. Okay? And then something that is very important in this chapter is shadow price, which is also called as dual price. And the last one is slack. Slack सीखोगे तो critical and non-critical constraints are important. And finally,
sums based on shadow lab, राइट। ये सारी ही चीजें मैंने क्लास में करी हुई है, ओके, बट एक क्विक रिविजन कर देते हैं। व्हाट इज शेडो प्राइस? शेडो प्राइस इज वेयर वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गॉट मोर देन वन प्राइजेस, राइट। कभी क्या होता है, अगर आपके पास स्कैर्सिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रोडक्शन के लिए 20 लेबर्स चाहिए लेकिन मेरे पास 17 लेबर्स ही है, राइट, तो एक्स्ट्रा 3 लेबर्स मुझे बाहर से कहीं से आउटसोर्स करने पड़ेंगे, या फिर मुझे हायर करने पड़ेंगे, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग लेबरर्स को आई हैव टू गिव ओवर टाइम। सो वो जो हम एक्स्ट्रा प्राइस पे करते हैं, जो हम डिफरेंट प्राइस पे करते हैं हमारे लेबरर्स को, आउटसोर्स को, या फिर न्यू एम्प्लॉयज को, दैट पर्टिकुलर थिंग इज शेडो प्राइस, ओके। एंड स्लैक प्राइस इज वेयर, सेम अगर लेबर का एग्जांपल ले लो, माय लेबर इज पेड टू वर्क 20 आवर्स बट आई ओनली गॉट वर्क फॉर 15 आवर्स, देन जो मेरा लेबर अंडर यूटिलाइज्ड है 5 आवर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड अ स्लैक प्राइस। स्लैक प्राइस में दो चीजें होती है, क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट्स। क्रिटिकल कंस्ट्रेंट मतलब अब वो लेबरर के 5 आवर्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में जाके हो सकते हैं। नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट मीन्स आई एम श्योर आगे जाके वो लेबरर के 5 आवर्स मेरे कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले, राइट, दैट इज कॉल्ड नॉन क्रिटिकल कंस्ट्रेंट। So this is how you approach this kind of questions, and मैंने देखा है mostly exam में shadow price and dual price, you know, they might be asked as a definition for 5 marks, कभी कभी सेक्शन ए में, कभी कभी सेक्शन बी में आ जाता है, राइट। सो शेडो प्राइस, स्लैक प्राइस, समथिंग यू नीड टू नो द लॉजिक। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जो हमारे एग्जाम किट में है एंड स्टडी टेक्स्ट ऑफ कैप्टन बुक में भी है। प्लीज गो थ्रू देम, इट विल गिव यू अ बेटर इंसाइट ऑफ हाउ टू कैलकुलेट देम, राइट। ये चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज्यादा मैं बताऊंगी एंड लेंथी भी है। टेक 2 minutes एंड रीड थ्रू व्हाट आई हैव रिटन हियर, ओके। Hey guys, I hope आपने देख लिया होगा। Let's go to the next chapter. Next chapter is called pricing. Pricing में you would say mostly theory questions इसमें से आते हैं ये वाले chapter से, and ये भी important है। Right, so let's write down chapter 7. Importance. Sorry, this is chapter 5. Sorry, this is chapter 6. हमने मैंने थोड़ा चैप्टर नंबर में इश्यू कर दिया। चैप्टर 5 वाज आवर ब्रेक इवन या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस वाला चैप्टर। चैप्टर 6 वाज प्लानिंग विथ लिमिटिंग फैक्टर्स, एंड चैप्टर 7 इज प्राइसिंग। अब प्राइसिंग में आपको कैसे टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राइट। तो पहले तो प्राइसिंग में यू शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, ओके। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें बुक में दी गई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक
ब्रीफ दे देती हूँ कि आपको क्या क्या ज्यादा इम्पोर्टेंस में पढ़ना है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता चलना चाहिए, लाइक परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट. परफेक्ट मार्केट किसको बोलते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट किसको बोलते हैं, दैट यू शुड बी नोइंग. Then, when we talk about calculation, so as I said earlier, pricing में से calculation के questions काफी कम है. I would say like mostly theory वाला chapter है ये, ठीक है. But there are some important facts and important formulas that are in this chapter. Okay, specifically if I say I am focusing on demand-based approach, demand-based approach. Okay, demand-based approach is one of the three approaches. So actually, let's just write here. Right, 2 number पे हम लिख देते हैं 3 broad approaches to pricing. 3 broad approaches to pricing में पहला आता है demand based approach. Demand based approach में अगर आप देखो, there are 2 approaches to that. One is an algebraic approach and the other one is a tabular approach. So algebraic approach में there are very good formulas जिसके साथ मैंने 2 to 5 marks के questions देखे एग्जाम में, तो उसको जरा यहाँ पे हम एक कैप कर लेंगे, ठीक है. algebraic क्या कर दिया है स्पेलिंग में algebraic approach formulas, right? So पहला तो उनका जो फॉर्मूला है that is of price formula. P is equal to A minus B Q, right? P is equal to A minus B Q. P is the price. So we just write them down here. P is price. A is the maximum price at which demand will be zero. राइट. सो ये थियोरेटिकल प्राइस है जो डिमांड को जीरो बना देगी, बिकॉज वो प्राइस इतनी हाई है कि वो प्रोडक्ट को सेल नहीं करने देगी मार्केट में. बी हियर इज द प्राइस दैट हैज टू बी चेंज विद द चेंज इन द डिमांड बाय 1 यूनिट. सो बी इज द प्राइस, सॉरी, बी इज द अमाउंट the price has to be change the demand by 1 unit, right? So that is where A and B is, and obviously Q is the quantity. मैंने इससे रिलेटेड सम्स क्लास में किए हुए हैं, उनको प्लीज आप देख जाइए. इसके क्वेश्चंस मैंने देखे हैं प्राइसिंग में, क्योंकि अगर आप देखो तो प्राइसिंग के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बहुत ही कम है. जैसे मैंने बताया, सिर्फ अलजेब्रिक अप्रोच है डिमांड बेस्ड अप्रोच में. सो दैट इज द ओनली थिंग व्हिच वी कैन एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग क्वेश्चंस. And I've just done this for you. And there's one more thing that is important here, which is the value of MR. MR is marginal revenue. MR is marginal revenue. उसकी भी फॉर्मूला होती है where MR is equal to 2BQ. A minus, we just write as A minus 2BQ, right? सारे वैल्यूज का इंफॉर्मेशन सेम रहेगा, सिर्फ प्राइस में जैसे आप लेते थे A माइनस बी क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू में आप लेते हो A माइनस 2BQ. ओके, there is one more thing here. Maximum profit will be equal to marginal revenue is equal to marginal cost, right? Marginal revenue MC का फुल फॉर्म मैंने दिया हुआ है. MC is marginal cost, right?
ये लॉजिक पे मैंने सम्स किए हैं अपने क्लास में, प्लीज 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 आप उसको एक बार देख लेना. Then we have PED, price elasticity of demand, is PED का formula is change in quantity demanded as per percentage of demand divided by change in price as per percentage of the, right? इंटरप्रिटेशन भी है पीईडी का, वो भी हम देख लेते हैं. If PED is more than 1, it's an elastic. Is PED less than 1, it's an inelastic, right? So we have modulated them as elastic and inelastic demand. इसके भी questions you can expect, as I said earlier, very less calculative questions are available for, for the pricing chapter. And this is something, if asked in terms of calculation, this is the thing that we can expect, right? Then let's go to the next one. Tabular approach. For demand-based pricing. By the way, demand-based pricing को economist approach भी बोलते हैं. Right? Tabular approach is pretty simple comparatively because यहाँ पे आपको एक table format में information दी जाएगी and वही table format में आपको find out करना है marginal revenue, marginal cost. If you don't know what is marginal revenue is the revenue. Marginal revenue is the revenue gained from one extra sold product, right? इसका मैं एग्जाम्पल भी दे देती हूँ आपको यहीं पे. एग्जाम्पल, one product sold for say $50. Two products sold for $94. Three products sold for $132, right? So इसका marginal revenue कितना हो जाएगा? One product marginal revenue is the same because उससे पहले product company ने एक भी sell नहीं किया है, right? तो 50 होगा. Two products MR is going to be 94 minus 50, right? तो वो कितना हो जाता है? It is going to be 40, right? And three products का marginal revenue कितना हो जाएगा? 132 minus 94, right? तो वो हमारा हो जाता है 38. 38. राइट. सो मैं जरा एक डॉलर साइन डाल देती हूँ. गाइस एग्जाम में ये डॉलर साइन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, करेंसी वैल्यू.
प्लीज यूज इट, राइट. सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट मार्जिनल रेवेन्यू अगर टैबुलर अप्रोच में दिया हुआ है. तो मार्जिनल कॉस्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट पेड फॉर वन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड. इसका भी सेम लॉजिक रहता है, राइट. सो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं. one product made for, कॉस्ट का वैल्यूएशन निकालते हैं, हाँ, से $44. two products made for $56. three products made for $71, राइट. तो अगर हमको इसी का MC मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, सो आई वुड से one product marginal cost is the same, which is 44, right. Two products marginal cost is 56 minus 44, right. तो कितना हो गया, वो हो गया $12. Three products marginal cost is 71 minus 56, right. तो वो हो गया हमारा $15, राइट. सो वैसे ही टैबुलर अप्रोच में हम मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू निकालेंगे, राइट. मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू का ये लॉजिक है. इससे पहले हमने मार्जिनल कॉस्ट और रेवेन्यू वी डिड इट थ्रू द अलजेब्रिक अप्रोच. इसको एक बार देख जाइए आप. राइट, लेट्स मूव फर्दर. टैबुलर अप्रोच में मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है. सो वहां तक हमारा हो चुका है. यस, कॉस्ट फंक्शन. टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला है. Y. So Y is equal to A plus B X, where Y is the total cost, A is the fixed cost, B is the variable cost, and X is the quantity manufactured. Right? This is the formula of total cost. Y is equal to A plus BX. Y is the total cost, A is the fixed cost, B is the variable cost, and X is the quantity manufactured. Right? I think हमने सारे ही formulas ये वाले chapter के cover up कर लिए हैं. Right? Fixed cost and total cost में एक और variation था. We'll just quickly go through it. 1 minute. राइट, सो ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है. यस, मैं आपको बोल रही थी कि टोटल कॉस्ट में ना थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन और है जो हम डाल देंगे यहाँ पे.
टोटल कॉस्ट पे वेरिएशंस होते हैं विथ वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स एंड total cost with increased sales and production levels. Right, so ये दो variations के भी मैंने questions करे हुए हैं क्लास में. You please have a look at that, okay? Now, let's move to the next thing. Cost plus pricing. Right, cost plus pricing is price is equal to cost per unit plus markup और margin. काफी स्टूडेंट्स को मार्कअप और मार्जिन में इश्यू होता है, ठीक है. सो मार्कअप, आई एम गोइंग टू राइट अप हियर अगेन, मार्कअप इज द प्रॉफिट expressed as a percentage of cost, where cost is 100%. Right? मतलब कॉस्ट के बेस पे आप मार्कअप निकालते हो. मेरी स्पेलिंग्स में बहुत एरर होता है, ignore it. And margin is the profit expressed as a percentage of the sales price, where sales is 100%. Right? So, price, cost plus pricing is a technique जहाँ पे आप अपना जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो लेते हो प्लस एक डिजायर्ड प्रॉफिट लेते हो. एंड डिजायर्ड प्रॉफिट आप टू मेथड से ले सकते हो, एक होता है मार्कअप और एक होता है मार्जिन. ओके, फिर हमारी बुक में दिया हुआ है customer based approach, which is the second approach of the three costing pricing methods. Right, so customer based approach में भी काफी information है. just see उसको 1 2 3 हमने नंबर दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया, तो यहाँ पे भी नहीं देंगे. एंड इसको बोलते हैं मार्केटर्स अप्रोच. ऑल्सो स्पेलिंग्स को सुपर इग्नोर करना. राइट, सो कस्टमर बेस्ड अप्रोच इज बेसिकली अप्रोच जहाँ पे हम कंपनी के कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ज्यादा उसको फोकस करते हैं. राइट, एंड हियर there are different types of pricing methods that are given in the in your book. अगेन ये पूरा का पूरा थियोरी है. सो प्राइसिंग मेथड यहाँ पे है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो हमने अभी ऊपर किया था. राइट, जहाँ पे एक कॉस्ट होता है टोटल कॉस्ट एंड देन यू हैव योर डिजायर्ड प्रॉफिट, ईदर इट इज इन फॉर्म ऑफ मार्कअप और इट इज इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन. राइट, एंड देन सेकेंड हो गया आपका मार्केट स्कीमिंग. राइट, मार्केट स्कीमिंग इज अ टेक्निक जहाँ पे आप एक्सपेंसिव या हायर प्राइस पे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं ताकि ओनली एलीट कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स परचेज करें. एंड अनदर एडवांटेज ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस इनिशियली इन द मार्केट इज बिकॉज आप अपना ब्रेक इवन जल्दी से कवर अप कर ले. आप अपने फिक्स कॉस्ट जो पहले से कंपनी इनकर करती है उसको जल्दी से कवर अप कर ले. राइट, देन यू हैव
penetration pricing. Penetration pricing is where you are launching the product in the market at a very cheap rate. So it becomes, something which everybody wants to purchase because obviously it is cheap. And then once it is accepted by the people around, then you will increase the price of it. Okay. Next is complementary products. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग इज जहाँ पे आप मोर देन वन प्रोडक्ट एक साथ बंडल में सेल करते हैं और दोनों के प्राइसेस इक्वेट करते रहते हैं. देन प्रोडक्ट लाइन प्राइसेस. Product line pricing is where company has got different line of product for different kind of customers. It has got like, a different type of customer base. Like, if you are going to cater a market which has got every kind of people, middle class, lower middle class, upper middle class, higher upper class, etc., then there are different product lines that you can sell under one name only to different people. मैंने इसके लिए example आपको टाटाज एंड सन्स का दिया होगा जहाँ पे वो लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स सेल करते हैं. जैसे they also do high end automobiles like Range Rover, and they have got general also like Tata Nano. They are into industrial vehicles also like Tempos वगैरह होते हैं टाटा के. That is called a product line, and every product line has got a different pricing, even though all of them are automobiles. Then you have volume discounting. वॉल्यूम डिस्काउंट प्राइसिंग इज बेसिकली जहाँ पे अगर बल्क परचेज हो रहा है तो आप उसको थोड़ा सा चीपर में सेल करते हैं. देन यू हैव प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. Price discrimination normally happens where companies can have a different price in a different place because it is not sold, the product is not sold at a maximum retail price. Okay, so you can discriminate the price depending where it is. छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं इसका. अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आइसक्रीम खानी है, ठीक है, तो एक नॉन ब्रांडेड आइसक्रीम खानी है. ओके, सो अगर आप स्टोर में नॉर्मली जाके एक नॉन ब्रांडेड आइसक्रीम लो तो मे बी इट विल बी लाइक 20-25 रुपीज. ठीक है, और अगर एक वेरी हॉट समर पे अगर आप बीच पे गए हो और बीच पे आपने वही चीज वहां से लेनी है, राइट, तो वो चीज शायद आपको 100 रुपए में दे देगा वो, राइट, एंड आप परचेज भी कर लोगे बिकॉज उस दिन आपको वो यू वांट इट एंड यू आर एंजॉयिंग विद योर फैमिली, सो यू लाइक माइट एज वेल चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर देंगे. दैट इज कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और एक एग्जांपल देती हूँ. आई एम श्योर आप सब सिनेमा में गए होंगे, राइट. सो इफ यू गो टू अ सिनेमा, द सेम थम्स अप पेप्सी का बॉटल जो आपको आधे लीटर का 30 रुपए या 35 रुपए 40 रुपए में बाहर मिलता है, वही आधे लीटर थम्स अप या पेप्सी का आप एक पेपर कैन में उसका आप 200-300 रुपए पे करते हैं, राइट. दैट इज कॉल्ड अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्रोडक्ट वही है, ब्रांड भी वही है, क्वांटिटी भी वही है, बट स्पेस अलग है, प्लेस अलग है, राइट. Relevant cost pricing. Relevant cost pricing is where, oh, sorry. Relevant cost pricing means जहाँ पे products का प्राइस एक दूसरे से देख के आप इसको मूव ऑन करते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, राइट. लाइक मोर देन वन प्रोडक्ट का प्राइस आप रेलिवेंस के हिसाब से कॉस्टिंग में बिठाते हो. सो दिस इज अबाउट द मार्केटर्स अप्रोच एंड कैसे मार्केटर्स अपने डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं कंपनीज में. I think I have covered everything in this chapter. So मैंने factors that influence pricing वो मैंने नहीं किया because उसमें cost competitors हैं, customers हैं. फिर calculations है, calculation में PED कर दिए, demand curve, cost function, cost plus price, relevant cost prices, and different types of pricing strategies. So more and more आपने सब कुछ कर दिया है. Relevant costing coming chapter में, chapter number 8 में पूरा descriptively inform किया गया है, पूरा अच्छे से उसका information दिया गया है. राइट, सो वी आर गोइंग टू मूव इनटू दैट नाउ. एक 2 मिनट ले लीजिए एंड ये जो प्राइसिंग बेसिस है उसको अच्छे से देख जाइए.
राइट, आई होप आपने देख दिया होगा ये। लेट्स डू वन मोर चैप्टर। ये हमारा है चैप्टर नंबर 8 एंड ये है रेलेवेंट कॉस्टिंग पे। मैंने आपको इससे पहले जस्ट बताया था कि रेलेवेंट कॉस्टिंग का एक सेपरेट चैप्टर है जो हम करने वाले हैं, एंड ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इट इज गोइंग टू लुक एट रेलेवेंट कॉस्टिंग, इट इज गोइंग टू लुक एट मेक वर्सेस बाय डिसीजंस एंड अदर शॉर्ट टर्म डिसीजंस। ओके, सो क्या क्या कवर हो रहा है ये चैप्टर में, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज रेलेवेंट कॉस्ट। सो मैं उसको एक आपको क्लियरली बता देती हूँ। रेलेवेंट कॉस्ट is any future incremental cash flow, right? Future इंडिविजुअली एक एक टर्म को हम ब्रेकअप करके एक्सप्लेन करेंगे। फ्यूचर मीन्स एनी कॉस्ट levied in the future, incremental, any increase in cost because of accepting a project. Cash flow, free inflow or outflow of cash, right? So that is relevant cost, inflow and outflow of cash, cash flow. ये बता रहा था, राइट? सो ये एक आपको क्लैरिटी है क्या चीजें रेलिवेंट कैश फ्लो में आती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है हमारे बुक में, कैश पोजीशन if accept proposal A and cash position if reject proposal B, राइट? तो यहाँ पे रेलिवेंट कैश फ्लो क्या हो गया? इज इक्वल टू A minus B or accept minus reject, right? So this is how we handle the cash positions if accepting a proposal or rejecting a proposal. So a relevant cash flow is A minus B, acceptance minus rejection, right? अब क्या क्या कॉस्ट यहाँ पे नहीं लेते हो, राइट? कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड, सॉरी, इन रेलेवेंट कॉस्ट। एक आप क्या नहीं लेते हो? फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि ये पहले से इनकर करी हुई है। दूसरा कमिटेड कॉस्ट एंड तीसरा संक कॉस्ट। ये तीन कॉस्ट आप नहीं लेते हो रेलेवेंट कॉस्टिंग में बिकॉज दीज आर नॉट समथिंग विच यू स्पेसिफिकली डू फॉर द अपकमिंग प्रपोजल और अपकमिंग प्रोजेक्ट, राइट? व्हाट डू यू डू टेक? cost that is included in relevant costing technique is opportunity cost, right? That is what you take in relevant costing technique. ये तो हमारा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू यू डील विथ रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल? तो पहले तो कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट? एक तो अगर आपके पास मटेरियल है इन स्टॉक,
अगर मटेरियल इन स्टॉक है, राइट? तो इफ in regular use and will be replaced. My spellings will be replaced. Here, the relevant cost will be equal to the current purchase price. Right? That is one situation. Right? But if it will not be replaced, एक क्या है? Will be replaced. Right? एक है will be replaced. अगर will not be replaced हुआ तो क्या करोगे? Right? Here, relevant cost is equal to opportunity cost. Right? Relevant cost is equal to opportunity cost. Under this also, you just write here, is there an alternative use for the material? No. अगर answer is no, तो क्या होता है? Relevant cost is equal to scrap or disposal value. And if it is yes, relevant cost is equal to higher value in other use or scrap value. Right? This is how you deal with relevant cost in material. So ये तो एक हमारा situation हो गया where the material is in stock. This is one situation, right? अगर material is out of stock, तो आप क्या करते हैं? Relevant cost is equal to simple the current purchase price, right? ये हो गया हमारा मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? अभी इसको हम लेबर, देयर आर टू मोस्ट कॉमन वेरिएबल कॉस्ट, राइट? एक तो मटेरियल हो जाता है हमारा, एक हो जाता है हमारा लेबर, राइट? सो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ लेबर अगर हमको करना है, so there is first situation where there is a spare capacity. अगर स्केयर कैपेसिटी है तो रेलेवेंट कॉस्ट इज इक्वल टू $0, क्योंकि आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, राइट? आप ऑलरेडी अपने लेबरर्स को पे कर रहे हो, तो आपको उनको एक्स्ट्रा नहीं पे करना है. उनका जो स्पेयर कैपेसिटी है आप उसको यूज कर रहे हो, राइट? अदर थिंग, इफ देयर इज अ फुल कैपेसिटी, तो आप क्या करोगे, राइट? इफ यू कैन हायर मोर पीपल, then your relevant cost is equal to extra cost of labor. And if you cannot hire more labor, then your relevant cost is equal to opportunity cost
right? This is how you handle labor with full capacity and spare capacity. Let's see what else do we have. हाँ, मैंने पहले बताया था आपको relevant and irrelevant in terms of cost, right? एक quick information ले लेते हैं, which is relevant cash flow. Relevant cash flow में क्या क्या आ जाता है आपका? Purchase price of new machine, right? Hiring of new laborers, right? What else? If an existing machine which was to be sold but is not sold to use in the new project. ये भी हो गया रेलेवेंट ना, बिकॉज आप किसी एक मशीनरी को सेल कर रहे थे, लेकिन आप नहीं करोगे अब, राइट? बिकॉज आपको इसको कंटिन्यू करना है, आपको इसको यूज करना है, राइट? देन स्क्रैप, हाय मेरा स्पेलिंग, scrap and disposal proceeds of new assets bought, right? And next one is if machine is bought, sorry, not bought, borrowed from other department, right? This all is a relevant cash flow. Irrelevant cash flow क्या हो गया? Irrelevant cash flow क्या हो गया अपना? Depreciation, then अपना profit or loss on disposal, that includes accumulated depreciation, because वापस depreciation आ गया, तो depreciation तो हमारा एक it's like a नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? तो अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो भी एक नॉन कैश एक्सपेंस से रिलेटेड है, राइट? द ओरिजिनल परचेज प्राइस of existing machinery is a sunk cost, right? And lastly, the carrying value of the existing machinery is also having sunk cost and right. So all this is considered to be relevant and irrelevant cash flows, correct? Let's move to the next one. Relevant cash flow, irrelevant cash flow में यही है जो सबसे ज्यादा important है. क्या है मेरे spellings का issue यार? ये मेरे spelling का issue नहीं है. Labor. This is just, English way of writing, British way of writing labor and American way of writing labor. That's why it's different. Right? Next thing जो आपके लिए important है वो है make or buy decision, which is also a part of your relevant costing chapter. छोटे छोटे questions ये particular topic से expect कर सकते हो. Okay? Make or buy decisions में you have two things: make or buy decision. No
limiting factor. अगर no limiting factor है, then it becomes easy, because here then relevant costs are the differential cost between two options. मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग में स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैं आपको वापस क्विकली वहां ले जाती हूँ एक बारी. डिफरेंशियल कॉस्ट बिटवीन द टू ऑप्शंस वही है मेक और बाय विथ नो लिमिटिंग फैक्टर्स, सेम थिंग. बट अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आपकी सिचुएशन है विच इज मेक और बाय डिसीजन विथ लिमिटिंग फैक्टर्स, तो अब क्या करो. अगर मेक और बाय विथ लिमिटिंग फैक्टर्स है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप एक बार थ्रूपुट सीख जाओगे तो आगे दो इंसिडेंसेस पे आपको हेल्प करेगा. पहला इंसिडेंट मैंने आपको अभी प्लानिंग विथ लिमिटिंग चैप्टर में बताया था, विच इज आई थिंक चैप्टर नंबर 7. एंड दूसरा इंसिडेंस यहाँ है जहाँ पे आप मेक और बाय करोगे विथ लिमिटिंग फैक्टर, विच इज चैप्टर नंबर 8. तो यहाँ पे भी इसके स्टेप्स बनेंगे टू फाइंड आउट विद द लिमिटिंग फैक्टर्स. चलो बना देते हैं. स्टेप्स है. स्टेप 1, पहले आपको फाइंड आउट करना है सेविंग्स. ओके, सेविंग्स इज इक्वल टू परचेज प्राइस minus variable cost to make it. Step number 2, divide this by amount of scarce resource. Product wise. And this gives you saving per unit of the limiting factor. Then your step 3, rank your products, right? Where higher the rank, more priority. Step 4, allocate the resources to highest rank and going down to the lowest rank. And step 5, any product with unsatisfied demand can be bought from external sources. Right? मैंने बोला था ना, एक लॉजिक समझ जाओगे तो आगे जाके दो चीजों में काम आएगा. वो दो चीजें ये है. One was planning with limiting factors where you have a single limiting factor. वहां पे एक ट्विस्ट क्या था, आप फाइंड आउट. चलो तीनों को एक बार वापस से रिकैप करते हैं. थ्रूपुट अकाउंटिंग में the basis of ranking was finding the throughput per unit, which was sales price minus direct material cost. Planning with limiting factor में contribution के base पे होता था, which is sales price minus variable cost. And make or buy decision with planning with limiting factors में होता है based on purchase price minus the variable cost to make it. Right? So this is how
वी आर यूजिंग थिंग। उसके बाद जो रैंकिंग वगैरह एंड रैंकिंग एंड एलोकेशन है वो सेम ही लाइन पे चलता है। बस ये पहले में थ्रूपुट था, थ्रूपुट अकाउंटिंग में प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर्स में कंट्रीब्यूशन था, एंड यहाँ पे मेक और बाय में हमारा सेविंग्स है, राइट। उसके हिसाब से ये चलेगा आगे, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राइट, सो वहां तक आ गया है। और एक चीज हम क्या करेंगे अभी, थिंग्स टू कंसिडर इन मेक और बाय डिसीजन, राइट। मेक और बाय डिसीजन बेसिकली होता क्या है, कंपनी अपनी चीजें जो उनको लगता है कि हाँ हम खुद से बेटर प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको वो लोग खुद बनाते हैं। और उनको लगता है कि जो वो लोग उनका वो एक्सपर्टीज नहीं है, उनका वो फोटे नहीं है, दे प्लान टू आउटसोर्स इट टू समवन एल्स, टू समथिंग एल्स। दैट इज कॉल्ड अ डिसीजन ऑफ मेक और बाय, राइट। अगर कंपनी खुद से सारा ही प्रोडक्ट बना रही है, कंप्लीट एंड टू एंड सारे प्रोसेसेस कर रही है, तो वेल एंड गुड। लेकिन समटाइम कंपनी से अच्छा कोई और कर लेता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कंपनी इज मेकिंग द प्रोडक्ट वेरी नाइसली, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सप्लाई चेन उनका अच्छा नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जोमेटो वगैरह का एग्जाम्पल अगर ले लें, तो जोमेटो वगैरह का, जोमेटो ले लो, उबर ले लो, स्विगी ले लो, दिस कंपनीज वर्क ऑन ओनली ऑन चैनलाइजिंग बेसिस। वो लोग एक सुपर्ब एप्लीकेशन बना देते हैं जिसके ऊपर कस्टमर एंड सप्लायर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड दैट इज हाउ दे आर वर्किंग, राइट। सो दिस इज कॉल्ड मेक और बाय डिसीजन, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स खुद से अपना प्रोडक्ट कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करें और कितना ज्यादा सेल कर पाएंगे। वैसे सिचुएशन में रेस्टोरेंट्स को हेल्प के लिए आ जाते हैं जोमेटो, स्विगी एंड उबर ईट्स जैसी कंपनियां, जो उनको सपोर्ट करती है, उनके प्रोडक्शन को यूटिलाइज करती है करेक्टली, एंड सेल्स उनका इंक्रीज करती है, राइट। सो दिस इज हाउ अ मेक और बाय डिसीजन वर्क्स। हमने उसमें प्लानिंग विथ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड विदाउट लिमिटिंग फैक्टर्स देखा। अगर मेक और बाय में लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है तो इट इज वेरी सिंपल, आपको सीधा सीधा डिफरेंशियल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। एंड अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो वो लॉजिक अपना थ्रूपुट वाला सीधा रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम सेविंग्स फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो सेविंग्स का फॉर्मूला इज परचेज प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट, राइट। क्या चीजें यहाँ पे कंपनी को कंसिडर करनी पड़ती है व्हेन दे आर मेकिंग और बाइंग द प्रोडक्ट्स इन हाउस, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट द कंपनी नीड्स टू कंसिडर इज reliability of external suppliers, राइट। सेकेंड चीज क्या होता है, स्पेशलिस्ट, हाँ, स्पेशलिस्ट स्किल्स that they might have or the externals might have, जो उनके प्रोडक्ट को, कंपनी के प्रोडक्ट को एनहांस कर दे। थर्ड इज अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। फोर्थ इज सोशल और सोसाइटी परसेप्शन टू देम, राइट। Fifth is legal. What would be the legal implications, if at all, on the company? Then confidentiality will can be, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि ब्रीच होगी, लेकिन शायद हो सकती है। स्पेलिंग्स तो माशाल्लाह है ही, but thanks to the computer, right? And customers' reaction. So these are some things that need to be considered when we are, either selecting to make a product or buy it, right? देन इस चैप्टर में थोड़ा सा अपने को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी दिया हुआ है फॉर आउटसोर्सिंग। Then the next important thing after make and buy is called shutdown decision. Shutdown decision में बेसिकली कंपनी को देखना है कि अगर कंपनी शट डाउन कर रही है तो उसके क्या बेनिफिट्स एंड कॉस्ट हो सकते हैं, राइट। सो बुक में दिया हुआ है क्वांटिफाइबल एंड
non quantifiable cost and benefits of closure. राइट, क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ क्लोजर, जहाँ पे क्या चीज कंपनी को पता है कि ओके ठीक है ये एक्सपेंसेस तो हमको बेयर करने हैं, वो क्वांटिफाइबल हो जाएगा। जो चीजें कंपनी को लगती है कि हाँ ये एक्सपेंस हम बेयर नहीं करेंगे, वो हो जाएगा नॉन क्वांटिफाइबल, या फिर बेसिकली उनको पता नहीं होगा कि वो कितना एक्सपेंस होगा उनको, राइट, दैट इज कॉल्ड अ नॉन क्वांटिफाइबल। उसके बाद और एक डिसीजन या शॉर्ट टर्म डिसीजन जो कंपनी का है, जो ये क्वेश्चन में सॉरी जो ये चैप्टर में आप करते हो, उसको बोलते हैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। जब आप आगे जाके SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी समझाते हैं, राइट। सो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या क्या आ जाता है? वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में फर्स्ट इज द मिनिमम contract price. Minimum contract price is total net relevant cash flow associated with the contract. राइट, सो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होना चाहिए कि जितना मिनिमम कंपनी बेयर कर रही है उतना तो कंपनी के पास आना ही चाहिए, दैट इज कॉल्ड द मिनिमम कैश फ्लो दैट द कंपनी विल हैव। अब मैं क्विकली बता देती हूँ शटडाउन डिसीजंस एंड वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। शटडाउन डिसीजन इज वेयर कंपनी थिंक्स कि उसका एक ब्रांच या उसका एक प्रोडक्ट या फिर एक चैनल जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है उसको वो शट डाउन करने का डिसीजन लेते हैं। उसमें देयर आर सम कॉस्ट व्हिच कंपनी नोज ओके दे आर गोइंग टू बेयर, like a fixed overhead cost या फिर staff redundancy etc. company knows that they're going to bear, but there are some non quantifiable costs like customers को लगता है कि अरे प्रोडक्ट बंद हो गया या फिर ब्रांच बंद हो गया, so he might be challenging the company's viability. वो सारी चीजें are called non quantifiable cost, right? And when we come to one of contracts are contracts जो आपके नॉर्मल कोर्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है और वो क्लाइंट आपको कहता है कि आप मेरे लिए एक डिफरेंट प्रोडक्ट बनाओ जस्ट फॉर वन कंसाइनमेंट, तो वो जो भी आप एक्स्ट्रा उसके लिए बेयर करते हो या फिर आप उसको चार्ज करते हो इज कॉल्ड द वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। एंड हाउ डू यू चार्ज दिस काइंड ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लाइंट्स? minimum contract price is equal to total net relevant cash flow associated with the contract, right? So वो तो आप bare minimum charge करोगे ही करोगे, उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट आपको गेन करना है that also you will be taking on it, right? So this is how a one off contract normally works. Then I think yes, एक और important thing है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है which is joint and byproducts. Now joint product होता क्या है? Joint product is where more than one product is made from the more than one product is made from one single batch of from one raw material, right? And byproduct is also similar to joint product, but byproduct is a compulsory product, is a excrete of the main product, right? Byproduct is the excrete of main product. So this is how this both work. इससे रिलेटेड सम्स है एग्जाम में आएंगे, प्लीज 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 आप करके जाना।
right? So I think I have covered almost everything in this chapter. इसको क्विक लुक देख के जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 5, 10, 2 मार्क्स कुछ भी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? सो चैप्टर 8 में हमने पहले क्या देखा? वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट रेलेवेंट कॉस्ट इज, हाउ टू फाइंड आउट रेलेवेंट कॉस्ट, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड नॉन इंक्लूडेड कॉस्ट, how does relevant cost work with materials, how does it work with labor, relevant cash flow क्या relevant है, क्या irrelevant cash flow है, वो भी आपने देखा. Then we went to other short term decisions. One of them was make or buy decision, जहाँ पे अगर limiting factor है then you will be using the same pattern as you use for throughput and for the limiting factor question. अगर unlimiting factor है then obviously it does not make a difference. Okay. ओके ओके ओके, फाइनली ये वाला चैप्टर भी हमारा हो गया है. नाउ एक बार हम इसको क्विकली देख जाएंगे, राइट? सो मेक और बाय डिसीजंस, लिमिटिंग फैक्टर, नॉन लिमिटिंग फैक्टर्स, फिर अपने शट डाउन एंड वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजंस आते हैं एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द नेक्स्ट चैप्टर एंड दिस इज चैप्टर नंबर 9. लेट्स डू चैप्टर नंबर 9 एंड इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये नोट डाउन करते हैं. सो फर्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. वी नीड टू नो द डेफिनेशन of risk and uncertainty. So basically, what is risk? Risk is where you know how would be the circumstance if a project is accepted or rejected. That means the variability of the possible returns is known. If the variability of the possible returns is unknown, then it is called an uncertainty, right? So in this question, we are going to, in this chapter, which is risk and uncertainty, we will be focusing on how to reduce the uncertainty, right? So what are the ways to reduce uncertainty? First, let's write what is risk. Risk is where known possible returns are available. Uncertainty is unknown returns. Now the question is how to reduce uncertainty. Right. So there are various options available like focus groups. Then there is desk research. Then there is field research. Right, and field research में भी दो techniques हैं. I'm just going to write here only. Motivational and measurement. Right. So some ways to reduce the uncertainty. Measurement research. Types. Measurement research types में random sampling, quota sampling, paneling, surveying by post, and lastly, observation. Right? So these are the types. Then how to deal with, this is the important part, how to deal with risk
and uncertainty. So उसमें there are various models that we will be reviewing or methods. Right, so methods are sensitivity analysis, sensitivity analysis is where there is a what if question, right? So that means कि अगर कंपनी ने कुछ किया तो उससे overall what would be the impact, right? So sensitivity analysis is also called a what if question or what if analysis, right? That is the first one, sensitivity analysis. The second one is called simulation. जब sensitivity analysis कर रहे हो तो make sure you put their advantages and disadvantages. डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, लेकिन अगर एक सेक्शन सी का क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो हाउ टू इंक्रीज द बॉडी ऑफ द आंसर. Simulation is where more than one variables movement can be seen, right? So that is called simulation, correct? Where more than one variable can be seen. There is a computer-based thing, so it also has its own drawbacks. So आपके book में drawbacks भी दिए हैं. You can just go through it once. The third one is EV or expected values, where EV का formula is sum of all P, right? And here when we talk about sum of all P into X, where P is equal to P is the probability of the outcome, X is equal to value of each possible outcome. Right? So that is how it is. EV is the sum of all P into X, probability of the output and value of each possible outcome. Clear? इसके भी advantages and disadvantages दिए हैं. Just go through that once. Then comes payoff tables. Let me just break in between here. जिसमें आपको है maximix, minimax and maximax, maximin and minimax regret. इसका summary मैंने क्लास में किया हुआ है. You should go through it once. Finally, the fifth one is a decision tree. In exam, you don't have to draw a decision tree, but a decision tree
will be given and you need to calculate. Right? वैसे तो एग्जाम में काफी टाइम से डिसीजन ट्री का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर आएगा भी तो डिसीजन ट्री दिया होगा, उसके बेसिस पे आपको ईवी फाइंड आउट करना है, राइट? एंड जिसका भी हाईएस्ट ईवी आएगा वो डिसीजन या ऑप्शन आपको पिक करना है. सो आई राइट इट हियर. डिसीजन ट्री is based on EV, the decision or option with highest EV is to be selected. Right? काफी छोटा सा ही ये चैप्टर है, इतना ज्यादा वो नहीं है. At the end of this chapter, the author has mentioned what is a perfect information and what is imperfect information. So we'll just go through that also once. Perfect and imperfect information. Perfect information is something which is going to give you 100% accurate output. Imperfect information is something which cannot give you a accurate output. So that is how these questions would be based on risk and uncertainty. उसके बाद एक theoretical chapter है, chapter 10, which is called budgeting. Okay, so in budgeting, the author is first starting it why there is a need for budget. Right, so there are various reasons why it needs planning, control, communication, coordination, evaluation, motivation, authorization, delegation. ये जो सारे डायरेक्ट आंसर्स है, यू डोंट नीड टू बाय हार्ट, देम इज जस्ट नॉट रिक्वायर्ड. इट्स जस्ट दैट दे विल बी हेल्पिंग यू टू राइट आंसर. बजट का कोई क्वेश्चन आ गया सेक्शन सी में, तो this will give you a little matter to write. That is the all importance of knowing the advantages and disadvantages, or knowing something which is like very basic. Okay, then there is behavioral aspects of budgeting, where it is mostly focused on why companies would have a different behavior on budget. That means some managers would take budgeting differently and the other managers would take budgeting differently because of the way they are taking the whole budgeting concept, and that is why they would have a different behavior for different types of budgeting, right? Then after we would be going to the difficulty level of budget. Right, where we will be talking about the expectations and aspirations. Right, expectations and aspirations. Then approaches to budgeting. That means different types of budgeting. The first type of budgeting is called top-down versus bottom-up budgeting. This budgeting is where companies would look at two ways of budgeting. एक budgeting है जो
strategic level managers would give it to the tactical level managers, and this is something which is enforced where the company has got less time to make decisions, or the company wants to work into a particular fund frame only. Bottoms up budgeting is where the lower level staff members also have an opportunity to put their problems out and discuss why they would need a higher or a lower budget, right? That is also called a participative way of budgeting, because obviously the lower level management and the staff members do have a right to have a say, right? So these are the types of budgeting known as top down and bottoms up. They are also known, top down is also known as an imposed style of budgeting, and bottoms up is also known as a participative style of budgeting. मैं यहाँ बाजू में ही लिख देती हूँ the other name for it. Right? Then comes the next one, which is incremental budgeting. Incremental budgeting is where a company is going to have one extra period added to its existing budgeting period, but it does not have any motivation to that. Okay, so incremental budgeting is where previous period's budget is taken and values are added or subtracted to cover the inflation. Previous period budget and add or subtract funds to measure up the inflation. Right? उसके बाद आ जाता है अपना जीरो बेस्ड बजटिंग. जीरो बेस्ड बजटिंग में मैंने आपको बताया था डिसीजन पैकेजेस यूज होते हैं, and where all values are taken as zero and have to be justified in each period. Right? So that is called a zero-based budgeting, where all values are taken as zero and have to be justified in each period. Right? After that, इनका आ जाता है अपना rolling budgets. Rolling budgets is continuously up to date by adding another accounting period. It's a continuous budget made by adding another accounting period. Right? If there is any new sanction of value, then that has to be rebudgeted. Okay, and rolling budget is mostly used where the control is tight. Right? Then comes our activity-based budgeting, where each activity is justified and a budget is sanctioned for it. Right? Where each budget is justified and the budget is sanctioned for individual activities is called activity-based budgeting. इसके बाद आ जाता है अपना feed forward, पहले feedback control. Feedback control is the difference between planned output and actual output achieved.
and the modification of subsequent action or plan to achieve it. Future economic right? That is feedback control. फीडबैक में भी दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक ये सारे थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सेक्शन ए बी या सी किसी में भी इंडिविजुअली भी पूछे जा सकते हैं, या फिर इफ इट इज आस्क्ड एज अ थ्योरी देन इट कैन बी आस्क्ड इन सेक्शन सी फॉर अ 5 marker. Okay, but all over budgeting is an important chapter. Let's go to the 7th one. Feed forward control. Feed forward control compares budgeted results against a forecast. Right? Now the question is how to select a budget. So 7 types of budgeting approaches hai. Top down versus bottoms up. That means imposed or participative style. Incremental budgeting, zero based budgeting, rolling budget, activity based budget, feed forward control and feedback control. Right? You can be asked a question like an MCQ in section A. If in the section B it is asked, then it might be a scenario obviously related 10 marks के सारे questions ही budgeting पे आ जाएंगे. या फिर अगर थ्योरी में टाइपिंग वाला आंसर आएगा तो इट कैन बी लाइक 5 marks or a 7 marks question where they would ask you to either compare two budgeting styles or something like that. Okay. Now how to select a budget. So the factors to select a budget are types and size of organization, type of industry, type of product and product range, culture of organization. So these are some bases on which the industry will be selected. Factors of the budget will be selected. Sorry. Then how to deal with uncertainty, because see, uncertainty वाला एक topic है. Please go through that also, where they are talking about the social and political unrest. मतलब external factors through which the company would have uncertainty, to social and political unrest, machine breakdown, customers decide to buy your product less, labor strike or trade union strikes, technological advancement, increase in the raw materials value or foreign exchange value. So all this are these are actually the external factors, but they will impact your company because they are going to impact the budgeting also.
right? So those things are something which is given in the book. You please go through that. Yes, something very important which is beyond budgeting. मुझे फीलिंग आ रहा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, but I'm still not sure. Budgeting, why am I writing this? Budgeting, right? So beyond budgeting is something, where the companies are thinking about all the other issues, not just the financial issues. They will be looking at, the non-financial issues to assure that they are more environmentally conscious than against others. And there are 6 principles. Right. So the first one is clear principles and boundaries. The second one is relative success. The third one is high degree of freedom. The fourth one is frontline teams. Taking responsibility. The fifth one is relationship with the customers. That means the frontline teams. Relation with customers. And the last one is information system should be transparent and ethical. Right. So these are the 6 principles of beyond budgeting. Beyond budgeting, as I said, is something which is going to look into the future of the company, assuring that everybody is involved in it, right? Because क्या होता है, frontline team is someone who does not take the responsibility, right? After all, they are also the ones who are going to disturb the budgeting on a larger scale. So that is what is asked here. Benefits of advantages or benefits of beyond budgeting. What's wrong with me? I'm just writing budgeting for budgeting. Right. So the first one is faster response time. Right, because if everybody in the channel, right, from the customer relationship or frontline managers to the backend managers, if everybody is responsible, the relation is, the work is going to be much faster. The second one is better innovation. Because if everybody is involved, there are chances that better innovation can be achieved. Then there is lower cost in long run. Right? Then improved customer and supplier loyalty. Right? So these are the advantages of beyond budgeting. That is all about budgeting. Budgeting is a chapter which is completely theory. As I said, it has little bit of calculations based on incremental and flexible calculations, but that I have covered in your classes. Theory में अगर आप देखो क्या important है, तो I have put up everything that you can do, which will help you to clear out your section A, B, and C. Okay, let's go to the next chapter, which is chapter 11. Completely calculative chapter है. Okay, so it starts with the high-low analysis. इसका formula भी मैं डाल दूंगी यहाँ पे.
high-low method or high-low analysis, then your regression, correlation, time series, learning curves में steady rate and tabular algebraic approach, learning curves में right slow and application, and quantitative analysis के limitations of the models, right? So high-low analysis or method में आपका formula क्या होता है? You will find out there are steps here. So step 1 is select the highest and lowest level of activity. Step 2 is going to be find out the variable cost per unit. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? Cost at highest level of activity minus cost at lowest level of activity divided by high level activity minus low level activity. Step 3 is going to be fixed cost as square fixed cost find out करना है, right? So fixed cost is equal to total cost at activity level minus total variable cost. Step 4 is equal to use the variable and fixed cost to forecast the total cost of specified level of activity. Use the variable and fixed cost to forecast the total cost for a specified level of activity. तो वही ये क्वेश्चन सॉरी ये इसके एडवांटेजेस एंड disadvantages, right? So you need to finish advantages and disadvantages. So this is all about the high-low method. इसके क्वेश्चंस मैंने क्लास में करे हैं आपके साथ. फिर आ गया Wright's law, right? Wright's law is something which is in the learning curve. So basically इसका क्या लॉजिक होता है? According to Wright, who is also author, स्पेलिंग मैंने गलत देखी. So according to the author tries to say कि अगर आपके पास एक नया प्रोडक्ट, नया कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, ओके, और आपके पास एक एम्प्लॉय है, तो उसको वो प्रोडक्ट को सीखने में टाइम लगता है, राइट? और ये जो टाइम लगता है, जो इवेंचुअली जाके टाइम कम हो जाता है, उसको बोलते हैं राइट्स लॉ ऑफ लर्निंग को. मतलब आप ज्यादा जितना वो प्रोडक्ट बनाओगे, अब उतने फास्ट हो जाओगे वो बनाने के लिए. That means the time to be consumed will be less, and that is called the learning curve. Learning curve के limitations या फिर you could say preconditions ले लो और limitations ले लो.
are labor intensive process, क्योंकि मशीन्स तो सीखती नहीं है, सो जो प्रोडक्ट लेबर इंटेंसिव है वही राइट्स लॉ के लॉजिक में बैठेगा. सेकेंड, प्रोडक्ट हैज टू बी न्यू. थर्ड, प्रोडक्ट हैज टू बी कॉम्प्लेक्स. Fourth, product has to be repetitive. Right? So these are the preconditions, or you can also say these are the disadvantages or limitations of a rights law. If it does not work better with anything else. मैंने rights law के question आपके क्लास में किए हैं. These kind of precondition and learning का questions will be asked in the exam. Better है कि आप उसको अच्छे से एक बार देख जाओ, तो उसमें problems नहीं आएंगे. ठीक है. Right? सो राइट्स लॉ में भी दो टाइप के अप्रोचेस है. एक होता है अपना टैबुलर अप्रोच एंड दूसरा था अपना एल्जेब्रिक अप्रोच. तो टैबुलर अप्रोच तो काफी सिंपल, आई वुड नॉट से सिंपल, लेकिन आप मेरे वीडियोस देखना इसकी, यू गेट अ मच बेटर आइडिया. एल्जेब्रिक अप्रोच में फॉर्मूला दिया हुआ है विच इज y इज इक्वल टू a इंटू x रेज टू b. राइट? इसके मैंने क्वेश्चंस भी करे हैं क्लास में, प्लीज आप देख जाना उसको. फॉर्मूलाज सब दिए हुए हैं मैंने. ओके, एंड हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट इज आल्सो समथिंग दैट आई हैव मेंशन्ड. व्हाट इज x and y and everything here? X is equal to cumulative number of units. Y is equal to cumulative average time per unit to produce X. X units. A is equal to time required to produce first unit of output. B is equal to index of learning, which is equal to log R. मतलब जो भी परसेंटेज, अगर 90% है तो log 0.9 divide by log 2. Right? Where R is equal to learning rate expressed as a decimal. Right? So this is how we would be doing the tabular approach and algebraic approach. 2 marks के लिए algebraic approach के questions आते हैं, बहुत simple होते हैं, मैंने क्लास में करे भी हैं. तो you please go through that, it will give you a very good information. And honestly बहुत मजा आता है ये वाले questions करने में. Right? और तो ये चैप्टर में से क्या important है? There is
linear regression also, लेकिन linear regression का formula is given in the exam, right? So वो आपको by heart नहीं करना पड़ेगा, right? And then you have your time series and trend line. Then you have your, you have time series and trend line, and you have your different types of variation methods. Sorry, just give me 1 minute, guys. I'll just do it. Right? Time series and trend analysis. उसके बाद आपको आते हैं forecast. वाह. Forecast and forecasting methods, right? After that you have correlation, जहाँ पे different types of correlations है. Right? So correlation में perfect and imperfect आ जाता है. Perfect and imperfect correlation, right? उसके बाद different types of correlation, जैसे perfect, partial and no, sorry, perfect, partial and no correlation, right? So that is something that we have here. Then you also have positive and negative correlation, right? So this is also something. Then you have coefficient of determination. So then we have finally correlation का limitations. ये सारा predominantly theory है. Again, section A, B में ज्यादा आने के उसके chances हैं. उसके बाद आ जाता है आपका time series analysis. Time series मैंने यहाँ पे भी लिखा था. Let's time series analysis में the first time series analysis में 4 types of variations होते हैं, right? So basic, cyclical, random and seasonal. राइट. सो ये 4 टाइप के टाइम सीरीज के एनालिसिस है, एंड उसमें फिर 2 मॉडल्स भी है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव. ऑनेस्टली मैंने इसके काफी सम्स देखे नहीं है पास्ट में, बट मैंने सम्स इसके किए हुए हैं क्लास में, सो यू कैन हैव अ लुक. एडिटिव मॉडल इज based on actual data, which is equal to just all addition of all 4 of them, which is trend plus seasonal variation plus cyclical variation plus random variation. तो ये सारे variations को add करते हो तो additive model मिल जाता है, right? And also one more thing, actual data is equal to T plus S, where S is equal to actual minus T, actual minus the trend. Okay? Multiplicative model is where you are going to multiply them. So that is the end of this chapter. इसमें भी advantages and disadvantages हैं.
तो मैं वही टाइम सीरीज के बाजू में ही लिख देती हूँ. Clear? Right? Let's move to the next chapter. Variances बहुत ज़्यादा important chapter है, बहुत ही ज़्यादा important. Advanced, sorry, chapter 12. Right? It is called advanced variances. Just. So basically इसमें आप different types of variances individually भी देखोगे and mixes में भी देखोगे. Okay? मैंने इसके क्वेश्चंस क्लास में किए हुए हैं एंड आई थिंक इसको करने में काफी टाइम हमको लग भी गया था, बट दे आर रियली वर्थ योर टाइम. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड डेफिनेटली आप 5 to 10 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, इस चैप्टर में से आएंगे ही आएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल्स वेरिएंस. राइट, सेल्स वेरिएंस में दो टाइप के वेरिएंसेस होते हैं. एक होता है सेल्स प्राइस एंड एक होता है सेल्स वॉल्यूम. राइट, सो अगर हम सेल्स प्राइस देखते हैं, so that is equal to actual quantity into actual price and actual quantity into standard price. Right, different. This is price variance, right? And it can be, मैं ऊपर ही लिख देती हूँ actually, adverse and favorable. Right, so adverse and favorable variances. Adverse means जहाँ पे कंपनी ने ज्यादा स्पेंड कर दिया उसको adverse बोलते हैं. जहाँ पे कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से कम स्पेंड किया उसको फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं. राइट, द अदर वन इज सेल्स वॉल्यूम, which is equal to actual quantity multiplied by standard margin. अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है तो कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, स्टैंडर्ड मार्जिन अवेलेबल नहीं होगा. राइट, एंड बजटेड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मार्जिन. राइट, इनका भी डिफरेंस इज कॉल्ड द वॉल्यूम वेरिएंस. ओके, then let's go to the next variances, which is called, oh yes, इसमें variances में आपको एक चीज याद रखनी है. there'll be reasons. Okay, reasons for variance, तो वो आपको एक बार देख जाना है. रीजन बोल दो, causes बोल दो. राइट, उसके बाद आता है मटेरियल वेरिएंस. इसमें भी रीजंस या कॉजेस हैं. So there are two types of material variances also, price and usage. So material price variance is equal to actual quantity into actual price and actual quantity into standard price. Right, and अगर आप material usage variance देखते हैं, so that is equal to actual quantity into standard price and standard quantity into standard price. Right, so differences, again the same logic will be here. If the company is using more money than expected, it will be a adverse variance and vice versa will be a favorable variance. Right, this is what we are doing.
we have to know the reasons and causes because that is a part of your interpretation. Okay, that is how you can interpret the company's performance, if it has performed good or performed bad. Then after comes labor variances. इसमें भी आपके reasons है. Reasons or causes है. So it is actual hours into actual rate and actual hours into standard rate. Right? This, I'm so sorry, I should have written it here only. This is your rate variance. Right? तो उसके क्या formula है? Actual hours into actual rate, actual hours into standard rate. Next वाला है आपका efficiency variance. Which is equal to actual hours into standard rate, and the other one is standard hours into standard rate. Right? उसके बाद आता है आपका variable overhead variance. इसमें भी reasons and causes है, so just keep that in mind. Variable overhead variance. इसमें दो टाइप के वेरिएंसेस हैं. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जिसमें आपका आता है फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट, and the other one is actual hour into standard rate. Next one is called the efficiency variance. So it is called variable overhead efficiency variance. That is actual hours into standard rate, and then your standard hours into standard rate. Right? इसके भी मैंने बताया कि you have to go through the values. Fixed overhead variance. Fixed overhead variance, तो उसमें expenditure आता है, जिसमें you have actual cost, जो mostly question में दिया होता है. Right? अगर नहीं दिया है तो actual hours into actual rate is your cost. But because this is a fixed overhead, तो इसका ये value निकालना मुश्किल होता है. So not to confuse you, but ये actual cost आपको दिया ही गया होगा. And it will be budgeted hours into standard rate. Expenditure का ये है formula. Volume is further divided into capacity variance, जिसका formula है budgeted hours into standard rates compared with actual hour into standard rate. और जो इनका दूसरा variance है, that is called efficiency. Wow, I wrote a right formula. Alright, spelling. Actual hours into standard rate and compared with standard hours into standard rate.
right? So this is how you find out your volume variance. Volume में दो है, capacity है and efficiency है. दोनों का variance आप compare करोगे तो you will get your volume variance. And expenditure में एक ही है, actual cost है. Actual cost and budgeted hours into standard hours. Fixed overhead variances दो चीजों में है calculated, absorption and अगर absorption costing method है तो definitely you have to take into consideration. अगर absorption costing है तो definitely you need to take consideration of all the variable cost and find out the fixed cost. लेकिन अगर marginal costing है तो contribution के logic पे चलोगे, मतलब selling price minus your variable cost. Okay. Labor, idle time and material wastage. Right, so that is also of two types. एक तो अपना labor rate variance जो हमने पहले find किया था. So I would say same as before. And दूसरा is your labor efficiency. Labor efficiency variance. The first one is productive efficiency variance. Productive efficiency variance में there are further things which is called idle time variance and product efficiency. So product efficiency का formula is actual hours worked multiplied by standard rate and standard hours worked for actual output of production multiplied by standard rate, right? So this is product efficiency. And दूसरा जो उसका formula होता है which is based on the idle time variance. Right? उसका formula is actual hours paid multiplied by standard rate and actual hours worked multiplied by standard rate. Right? So this is how you find out idle time variance and your product efficiency variance. Right? Control. The question here is how to control idle time and waste. Right? Because idle time जो unutilized है या फिर जो properly utilized नहीं हुआ है, that is something which is going to be very expensive. Right? एक certain level तक it's okay, लेकिन आगे जाके फिर वो ज़्यादा expensive हो जाता है. So idle time is something which is not good. So how to reduce it? By proper maintenance of field and machinery. Right?
by advanced production planning. Timely procurement. Of stores. Assurance of supply of power. And lastly, advanced planning for machines. Right? What is material waste भी आपको दिया हुआ, वैसे तो इतना important नहीं है, लेकिन मैं इसको quickly लिख देती हूँ. Material waste is like evaporation, sampling, pre-samples जो देते हैं वो, testing and scrapping. ये सब ही material waste होता है, क्योंकि after all you're going to give it for something which is not going to be converted into funds. Okay. Now, when we talk about variance, any variance is alarming. Okay, be it an adverse variance or a favorable variance, right? So factors to consider for variances are scrapping का क्या होगा? अरे, factors to investigate in variance are the size, if it is favorable or adverse, the cost, past pattern, budget, and reliability of figures. Right? So all these are the investigations of variances. Yeah. Then comes the most important part, which is the mix variances. इसके formulas काफी बड़े हैं, so I don't think putting them up would be making any difference, because putting the formulas would not help, honestly. Actually, when you do the sums, it is more helpful, it is more beneficial to you. But I will write down the steps to calculate the formula. Okay, just let me see. We have material mix steps, like as in mix and yield. We also have them for sales, quantity, and yield. Right? And then we go to the modern methods of it. तो पहले मटेरियल मिक्स का जो स्टेप्स है, सो बेसिकली मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस में दो टाइप्स के आते हैं, या मिक्स वेरिएंसेस में दो टाइप के आते हैं. एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस है. मटेरियल मिक्स वेरिएंस स्टेप्स. Step 1, write down the actual input of each material. Okay, which is also called as AQ into AM, actual quantity into actual mix. Then step 2 is you have to take the actual quantity. Take the actual quantity input
and copy it across the another column, right? Then you work back in proportions to find AQ into standard margin, right? Step 3, in the next column, find the difference between the above two steps. Step 4, multiply it with standard price per kilogram. Multiply it with standard price per kg. And this will give you a mixed variance. Right? ये theoretical approach है उसका. If you go and see my videos of how to calculate it, you will understand कि मैंने कैसे करा हुआ है. It's not very difficult. Basically आपको actual quantity to actual margin जो तीन चार जितने भी products है उसका addition जो होगा ना वही आपको AQSM में डालना है and फिर उसको proportionately multiply करना. Okay, I'm not going to write the steps for yield variance or sales mix or sales yield because it works in the same line only. Okay. But of course that is important, so I'm just going to write material yield variance and in bracket watch chapter 12 videos, right? Material yield variance बोल दो या फिर sales mix variance and sales yield variance. Just watch chapter 12 videos, it is in line with this only, right? ये सारे हो गए हैं traditional methods of variances. Also सबके interpretations हैं which is very important, so please go through that also. Then comes planning and operational variance. So whatever variances we've seen so far are called traditional variances, and modern variances are planning variance, right? Planning variance and operational variance. Right? Planning and operational variance for sales, मैं इसको नीचे ही ले लेती हूँ पूरे को. Right, so that is actual sales quantity multiplied by standard margin and revised
budgeted sales into standard margin. The difference between them is called the operational variance. Okay. Right. Planning variance का formula is revised budgeted sales multiplied by standard margin and original budgeted sales into standard margin. Right, so this is the operational variance and planning variance. इसके questions काफी आते हैं exam में. When it comes to planning and operational variance in terms of material and labor, it is very similar to the earlier one. Okay. I'm just wondering if you have inefficiency of variance is also something important. That means variances कहाँ नहीं work कर सकते हैं, whether is a non-standard product, where standard cost is outdated quickly, production is highly automated, वहाँ कैसे चला जाता है बताना, is highly automated. Ideal standards used. Emphasis on continuous improvement. Detailed information. Is required and monitoring performance is important. Right, so these are some situations where variances would not work properly. Then just go through once the behavioral issues and standard cost. That can come in your section C as like a little question, you know. And then when we're talking behavior also, there is a participation. Standard settings, like in terms of argument in favor and against. In favor and against. Right, so this is about this chapter, very lengthy chapter, लेकिन हाँ जैसे मैंने बोला एग्जाम में definitely आएगा, weightage भी ज़्यादा है. Okay. So guys, only 3 more chapters to go and then we'll be finishing with the mission series, like a quick revision of what is important in performance management. Okay, so let's go to the next chapter. This is our chapter number 13. एकदम ऊपर लेके जाते हैं. Yes.
chapter 13, right? Chapter 13 is performance measurement and control. So basically इस chapter में we have ratio analysis. Ratio analysis के सारे ही ratios करने हैं. So just write it down. Ratio analysis, right? So basically 3 types of ratios: profitability, liquidity, and the risk ratios. तो सारे ही करने हैं. So calculation of ratios, and most importantly, you have to do the interpretation of ratios. So calculation and interpretation of ratios is very, very important that you have to do, right? Obviously मैं ratios यहाँ पे segregate कर लेती हूँ आपके लिए. So first one is profitability ratio. Profitability, अरे यार क्या स्पेशल प्रॉब्लम है मेरे फॉर्म स्पेलिंग से, right? So profitability में कौन सा रेशियो है, आपको just go through them. There is this gross profit margin, which is equal to gross profit divided by turnover, and then you multiply the whole lot with 100, right? Second is operating profit margin, which is equal to operating profit divided by turnover into 100, right? Return on capital employed is equal to operating profit divided by capital employed, right, into 100. Right, so these are the major ratios. फिर आपका आता है asset turnover ratio. Asset turnover ratio का formula is turnover divided by capital employed, right? Capital employed के भी various formulas हैं, मैं आपको यहाँ दे देती हूँ. पहले मैं ROC का आपको एक alternative देती हूँ. और ROCE is equal to operating profit margin multiplied by asset turnover. So 2 ways से आप find out कर सकते हैं, right? I think I have covered. Right. Right. So सारा ये हमने cover कर लिया है. Second is our liquidity ratios. मैंने interpretation कैसे करना है I have showed you in my videos, so please look at that. Okay. इन सारे especially ratio calculations में interpretation का weightage is almost double than what the calculation weightage is. So don't forget doing that, okay? Current ratio का formula is equal to current assets divided by current liabilities, right? And sorry, just a minute, just a second. The second is quick ratio. Quick, is equal to current assets minus inventories, and then you divide this by current liabilities, right? So
current liabilities. For this, we also have three other ratios, which is inventory holding period ratio, inventory holding period, which majorly means inventory divided by cost of sales, and then you multiply that by 365 because inventory holding period is in terms of days, right? उसके बाद आता है अपना receivables collection period, जिसका formula is receivables divided by credit sales into 365 days. Then अपना payables period, which is equal to payables divided by credit purchase, right? Payables है तो purchase आएगा, multiplied by 365 days, right? So these are our 5 liquidity ratios: current ratio, quick ratio, inventory holding period मतलब कितना टाइम आप इन्वेंट्री होल्ड कर रहे हो, रिसीवेबल्स मतलब कितने टाइम में आपके डेटर्स आपको पैसे वापस दे रहे हैं, एंड पेबल्स मतलब कितने टाइम में आपके क्रेडिटर्स आपसे पैसे वापस मांग रहे हैं, right? So then we will go to the next one, which is the last one, which is risk ratios, right? So risk में आएगा गियरिंग रेशियो, गियरिंग इज इक्वल टू डेट divided by equity, okay, into 100. उसके बाद है इंटरेस्ट कवर, इंटरेस्ट कवर मतलब कितने टाइम या कितने टाइम तक आप अपने फाइनेंसेस का इंटरेस्ट पे कर पाओगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कर पाओगे, राइट? सो दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट divided by finance cost, right? Then the next one is dividend cover. ये भी सेम लाइन में जाता है इंटरेस्ट कवर के, लेकिन यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट इज फॉर डिविडेंड्स फॉर शेयर होल्डर्स, राइट? सो नेट प्रॉफिट यहाँ पे डिविडेंड्स के साथ डिवाइड हो जाए. इंटरप्रिटेशन आई एम टेलिंग यू अगेन, मैंने आपको सिखाया है अर्लियर, आपको वही लाइन पे फॉलो करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, बिकॉज एग्जाम में ऑब्वियसली ये कैलकुलेटिव एंड थियोरी है, लेकिन इसका कैलकुलेशन का वेटेज कम है, इसके थियोरी का वेटेज ज्यादा है, ओके? सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली. Next, issues surrounding the use of. So what are the disadvantages? Okay, disadvantages of ratios, या आप इसको ऑल्सो भी बोल सकते हो फाइनेंशियल, थोड़ा सा फैंसी वर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस indicators, right? So one of them is short term, ratios are short term. Second, there can be manipulation of results. Then there is ratios don't convey the full picture. So this is one of the disadvantages. That is why, because of this disadvantages, companies do have non-financial performance indicators, right? जहाँ पे हमने 2 टाइप्स के नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर मॉडल किए हैं. एक तो है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड,
right? So one of this is balanced scorecard, where we focus on customer, internal, innovation and learning, and finally we look at financial. So that means बैलेंस स्कोर कार्ड एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकते हैं एंड फाइंड आउट कर सकते हैं या इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा कंपनी के लिए बेटर है विद जस्ट वन मॉडल. द अदर वन इज कॉल्ड द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. Obviously, this is something which was made by Fitzgerald and Moon, लेकिन आपको ऑथर्स ऐड करने की जरूरत नहीं है. एंड ये बेसिकली वर्क करता है 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स पे. सो देर आर 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हियर, राइट. फर्स्ट इज dimensions, right? So मैं आपको दिखाती हूँ. Dimensions, standards and rewards. So ये उसके so according to these authors उनको लगता है कि कंपनी नॉन फाइनेंशियली ये 3 ब्लॉक्स के ऊपर खड़ी है, that is dimensions, standards and rewards. डायमेंशन में आ जाता है अपना मैं यहीं बाजू में ही लिख देती हूँ एक्चुअली. प्रॉफिट, competitiveness, then we have quality, then we have resource utilization, then we have flexibility and innovation, right? When it comes to standards, in standards we have ownership, achievability, and we have equity, right? In terms of rewards, we have clarity, motivation, and controllability. Yeah. So this is how our non-financial indicators are also taken into consideration. Okay. I think यही 2 important non-financial measures है that is important in this chapter. Behavioral consideration already यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको focus करके बड़ा करवाया show it to you. See, these are the behavioral or external consideration like short term. We already manipulation, ये सब हमने किया था. Participation in target setting, achievability of target, stakeholders, market condition and competitors. So these are some things to be considered. Either you are using a financial performance indicator or a non-financial performance indicator. लेकिन exam में questions अगर आते हैं तो अगर रेशियोज के आते हैं विच इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो आपको रेशियो फॉर्मूलाज के साथ कैलकुलेट करना है और इंटरप्रेट करना है. अगर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स आ रहे हैं तो आपको नॉन फाइनेंशियल मेजर्स कैलकुलेट करना है, राइट. और वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है कंपैरेटिवली बिकॉज फॉर्मूलाज याद नहीं रखने पड़ रही है, right? So mostly one of them would be coming in the balance scorecard or building block. लेकिन मैंने ज़्यादा balance scorecard के questions देखे हैं. And then you have to interpret it. Interpretation is very very important. वहाँ पे आप पे सबसे ज़्यादा marks, ठीक है? Interpretation is very important. Okay, so we have to consider that in mind. Next chapter. This is our chapter number 14.
ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है दोस्तों, फिनिश हो गया, राइट, एंड फिनिश हो गया, दैट मीन्स मेरे एंड से फिनिश हो गया, तुम लोग को तो पढ़ाई अभी शुरू करनी है विद द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, राइट. सो डिविजनल परफॉर्मेंस में ऑल्सो वी हैव अ रेशियो. सो here we have ROI, which is a divisional performance ratio. Formula of that is controllable profit divided by capital employed into 100, right. दूसरा है रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला, राइट. इसको मैं यहाँ पे ना डिविजनल परफॉर्मेंस रेशियो लिख देती हूँ. सो कंफ्यूजन लेस होगा, और दोनों में ही है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो आपको याद रखना है, राइट. रेसिडुअल इनकम का फॉर्मूला इज कंट्रोलेबल प्रॉफिट माइनस नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट. नॉशनल इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल मतलब अगर जो आप एक प्रोजेक्ट ले रहे हो तो उस पे अगर आप कोई इंटरेस्ट पे करोगे, दैट इज कॉल्ड नॉशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राइट. उसके बाद यू हैव ट्रांसफर प्राइसिंग. ट्रांसफर प्राइसिंग में ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेसिकली वेयर गुड्स आर transferred internally, what price is to be paid, right. Here the talk is when goods are transferred internally, what price is to be paid, that is the thing, right. Now the objectives of transfer pricing, objectives bolo, factors bolo, right, on which it depends are: one, goal congruence; second is performance measurement; third is autonomy, right, and the fourth is recording the movements of goods and services. Right, so this is what basically transfer pricing is based on. There are two methods, two important methods for transfer pricing. The first one is market-based approach, and the second one is cost-based. Right, so market-based approach and cost-based approach are two ways in which transfer pricing can be taken. Market-based approach मतलब पहले तो market-based approach, sorry, ट्रांसफर प्राइसिंग एक क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अगर कंपनी इंटरनली ही रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स बनाता है और डिविजनल ट्रांसफर है, दैट मींस ट्रांसफरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन डिवीजन टू मेक द फिनिश गुड इनटू अनदर डिवीजन, क्या कॉस्ट लगाना चाहिए, राइट. तो वो दो मेथड से बेस करता है, मार्केट एंड कॉस्ट. मार्केट बेस्ड मतलब जो भी मार्केट में अगर सपोज डिवीजन बी मार्केट से रॉ मटेरियल उठा रहा है तो उसको क्या कॉस्ट पे करना है, तो अगर वो सेम प्राइस ही इंटरनली पे करेगा तो उसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड अप्रोच. एंड अगर सिर्फ कॉस्टिंग जो डिवीजन ए की कॉस्टिंग है वही अगर वो पे कर रहा है तो उसको उसको कॉस्ट बेस्ड अप्रोच बोलते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, थियोरी भी आ सकता है एग्जाम में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट पोस्ट, राइट. एंड लास्ट एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत प्यारा सा छोटा सा, chapter 15, right, which is for not-for-profit organizations, ये वाला, right. So it is just basically talking about how can performance be measured in
for profit organizations. It's only focusing on that. So कैसे find out करना है, right? So here we will focus on value for money. And उसके 3 E's हैं. 3 E's, right? First E is money. Second E is efficiency. Third E is effectiveness. Right, so these are the 3 E's मैंने क्लास में explain करे हैं. You need to go through बहुत छोटा chapter, but that is all it is about. उसके बाद examinable chapter तो नहीं है. Chapter 16 is not examinable, but it helps to write the exam. In each class, wherever I have solved the sum, मैंने आपको spreadsheet कैसे use करनी है सिखाया है. Okay, so आपको chapter 6 को per se go through करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. More and more you practice on the Excel sheet, it is very sure that you are going to pass your exam because you will know how to use the spreadsheet better. Right, now my tips for your exam. First, do not panic. सबसे पहले डरना छोड़ दो. Second, be consistent in solving and studying. Give yourself a timetable. Okay? Practice, exam kit, and problems. Be prepared at least 5 days before exam with all the above tips. Right? एग्जाम के 5 दिन पहले, मिनिमम 5 दिन पहले आप सारी चीजें करके रेडी हो जाने की. अपना स्टडी टेक्स्ट, अपना एग्जाम किट, मॉक पेपर सारा हो जाना चाहिए. ओके, देन दोस 5 days आर saturation point time. Those 5 days are where you are going to absorb all the hard work that you have done for all this time period. Okay, so I hope you do very well, and I really wish all the best to all my students. You can always contact me, contact MEPL, and definitely you can get in touch with me, right? Their informations are written here. Their app is available. Their email ID, their website is given here, and the phone numbers are also given here. Okay. So all the best. Good luck from my side, and do very well.